Hello Anmol Yes. bhai, finally Yes, sir. seeing you in person or at least on video. How are you? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। I'm also good. So again I'm ऑडियो repeating. परफेक्ट? Audible? हाँ मेरे ऑडियो को तो आ रहा है. So again I'm repeating the instruction regarding this session, how we are going to proceed. So initially I will ask to him some general basic question regarding the preparation. Thereafter I will open the floor to all so that you can unmute your mic and ask him any question. And in between, if What you is have the any, medium? you can ask in the मीडियम comments. क्या होगा? What? इंग्लिश, हिंदी और दोनों मतलब bilingual. इंग्लिश में होगा? कुछ भी हो अच्छा, सकता बाइलिंगुअल. है. तो स्टार्ट करें. Also guys, अगर मीटिंग में कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है in between, तो you can join through the same link. So Yasharth, first of all, Adias, congratulations to you for this rank. Thank you. And it Thank you would be very much. better if you introduce yourself to the participants. Okay. So, my name is Yasharth Shekhar, and this was my third attempt. In the first attempt, I couldn't clear prelims. In the second attempt, I reached the interview stage but missed the final cutoff by around 13 marks. This was my third attempt, and I've scored 12th rank, and my optional was geography, in which I've ended up scoring the highest marks this year. Apart from that, my father is a government servant, my mother is a homemaker, and I've lived in many districts of UP. I'm from UP. Right now, I'm living in Ghaziabad for the past 7 years since I've done my graduation from St. Stephen's College in 2018 in economics honors. Before that, I've done my class 10th from City Montessori School, Lucknow, and class 12th from La Martinia College. And this is my basic academic introduction. Apart from that, I think everything else will be part of DAP then. My hobbies and everything, nobody is concerned about those. I think that's more than sufficient, Anmol, or should I talk about something? So how was your Okay. UPSC journey? Like, what are the mistakes and takeaways from this whole journey? I think the biggest mistake that I corrected in my third attempt from my first and second attempt is that in the first attempt, I did not do prelims test series and I ended up scoring very bad marks in my prelims, around 83. In my second attempt, I did not write test. I had written just one test in my last attempt, that too an essay in which I had ended up scoring around 84 or 85. And after that, I was so scared of doing another test that I would score so badly that I did not do any test at all. So that led to my general studies main score to around 758. 758. This time I have 863 because I did a lot of answer writing. Third mistake. So the two mistakes that I corrected in this attempt was to practice more and more tests for prelims and to practice more and more tests for mains. These were the first mistake. The second mistake I think I did was in terms of not reading newspaper. This year when I picked up newspaper before 12th of October, I had not read newspaper for 1 year and 9 months approximately. So approximately around close to very much close to 2 years, I had not touched the newspapers, and that cost me badly in my attempt. Third thing that I did not do was not to focus on my optional, and I ended up scoring a very average score of 251 in my second attempt. I think that optional, everyone, whatever optional they possess, they have the capacity to score very good marks. The thing with general studies is that you don't know. Even if you do your paper very well, you might not end up scoring 150. And even if you do your paper sometimes very averagely, you might end up scoring around 100. So with general studies, there is not a lot of scope for improving your marks, but with optional, there's always scope for improving marks. So the third thing that I corrected was to improve my optional. And I think the fourth thing that I did was to basically uh, not waste a lot of time, because in my second attempt I remember I was studying on an average around 9 to 10 hours. This time I increased my average to around 12 13 hours. So there is no sufficient or direct correlation between the numbers of hours you put in
and the result that you get. But eventually, once you are a serious student, you realize that the more number of hours you put in, the better results you will get. So I think these were three, four things that I think were wrong in my second attempt, and I was able to correct it. But again, this journey is full of ups and downs. And in fact, I've said in many interviews that there's only one up when you clear the UPSC. Okay, there's hardly any other up. Okay, but there will be thousands of downs. For example, once you've not done well in your prelims, once you've not done well in your one of the mains paper, you'll feel let down. But again, this is part and parcel of UPSC's journey. It's not like every aspirant, whether he's rank one, she's rank one, or rank 100th or rank 400, 600, whatever the rank may be, they have gone through this phase, and everyone will have to go through this phase. Nobody goes and writes exams and thinking, look, okay, I'm going to get a rank within top 100, top 50. Even I was not expecting a rank within top 20, okay, let alone 12. So the first reaction that came out of my mouth when I saw the result was Barbie. That was the word that came out of my mouth. So it's part and parcel of everyone's journey. But what I can tell you is that the amount of hard work and effort that you're putting in today, the amount of hardship that you face today, the result at the end will be worthwhile every ounce of sweat that you have shed. Basically, that's one thing I can tell you. The life on the other side is definitely much interesting and worth every struggle that you have that you've faced and you've overcome. Moving to the strategy part. So, what would you suggest any particular timeline for the beginner for 2023? As around 320 days are left. I think for now, the strategy should be both concentrated between an integrated mains and prelims preparation. Focus should be like 70% your focus should be on your mains, 30% on your prelims. But just before 2-3 months before prelims, your focus should shift towards the prelims, and you should try to do at least 60 tests of prelims and read the solutions as well. I suggest that 100 tests are the best number of tests that you can attempt. But again, not a lot of people can do 100 tests. So I would suggest a minimum baseline of around 60 tests should be done, and you should have read their solutions. And you see, the thing is that what you have read in your books plus your current affairs, any current affairs magazine that you read, for example, I read mains and PG 365, and the number of questions that you have seen in the question and answer formats. If you have done all these three things together before prelims, there's hardly any chance you won't clear prelims. But the thing with prelims is that you'll have to maintain your calm during the phase of preparation. During those 2 hours, you might have done the best effort that anyone could have put in for prelims. But again, maintaining your calm for those 2 hours is very essential. I would not say that this calm might be needed for your CSAT. Now CSAT have become tough, so you also need to practice for CSAT. But again, for your general studies prelims, those 2 hours of calm is most important, and you will be able to maintain that 2-hour calm only after you've done enough number of papers that your mind has actually trained itself to stay calm for attempting those 100 questions. And this was the mistake that I did in my first attempt. I had not done a single test. I thought, no, I'm a college topper. मेरे बहुत से percentage थे class 12th में, so I thought I'm naturally gifted with this capacity कि भाई हम तो बैठेंगे तो clear हो जाएगा. तो इस तरीके से नहीं जाना है, and you'll make a major mistake, and this cost me 1 year. 1 year की बात नहीं है, 1 year तो कैसे जैसे तैसे कट जाएगा. But the phase of depression that you face after you have not cleared your prelims for 2-3 months, that is a difficult challenge. I remember just after the results came on 12th of July 2019 for I think those prelims. 2019 जो मेरा पहला prelims था, उस दिन तो कुछ नहीं feel होता है. After 2-3 months, this realization starts to set in that okay, you have not cleared prelims. You're waiting for an entire year. And then again, your preparation, once you have not cleared your prelims, you would not even want to study your mains because you're so much concerned about your prelims. The only thing you would want to study for 1 year is prelims. And not only will you be wasting your time that you could have used for your optional preparation, mains preparation, you are so much obsessed with clearing prelims that you don't want to study anything else. That is a bigger challenge. And at the same time, the depression, the anxiety and everything, you won't get to sleep. I remember in my second attempt, since I had not done well in my prelims in my first attempt, I was not sleeping well 2-3 months before prelims because I had anxiety about giving prelims. So this is a very tough thing. Again, this is something that all aspirants would have to go through, and I have had my own share of struggles and misery.
But again, the fruit on the other side is worth every ounce of sweat that you have shed. But again, for 2,000 people who are going to give their first attempt in 2023, right now your preparation should be both prelims and tests. Keep giving tests for prelims. Like in 1 week, you are giving one test of prelims. For 15 days, one test of prelims. So you're writing 3 hours test. Let's say every fortnight, like 14-15 days, you're writing one test for mains, so that you how to prepare for that test. Your preparation is also staggered in that way. Your preparation, what you have to study in your general studies is aligned to what the test that you are giving. So in that way, your preparation can remain focused, systematic, and everything. But 2-3 months before prelims, your focus should shift entirely towards your prelims. But again, this time when you're studying for your mains, at least 50% time should be given to your optional. I've always suggested to everyone that your optional should be on your fingertips. If your optional is on fingertips, there's hardly any chance you won't find your name on the list. Okay, so, but there are rare chances when you've done exceedingly well in an option, you don't find your name in the list. But more or less, the situation is that the differential is not created in the general studies marks. The differential is created more or less by the optional marks. Okay, so improve your optional, 50% time for your optional, 50% time for your general studies in your mains preparation thing. This I would suggest. Any feedback mechanism you want to suggest to keep aspirant on a track, to check whether he or she is on a right track or not? What kind of feedback mechanism? Like I talked to the Arpit already at 54. He suggested to go with the Topper's note and copies to see whether we are making right notes or not. No, I did not look specifically at any toppers, copies, or notes. Okay. I think that everyone, I had joined a test series this year, so I was getting feedback from there itself. So once it told me that you were in the right direction, so I did not focus much on what I can do or what I can do. I was simply concerned with that. There's not a specific feedback mechanism that I focused on right away. I can't say that I have read so many toppers copies and anything. I hadn't, because I know that everyone has his or her own way of style of answer writing. You can't copy somebody's style. Nobody can copy my style. Okay, what you can do is that you can copy one thing or the other, but more or less I think everyone has his own style, and they should try to use that style to bring some kind of innovativeness or some kind of newness in their answers. I think no specific feedback mechanism that I can suggest. Many aspirant is asking regarding the optional strategy in the comment section. Hmm. So can you give the comprehensive strategy for the geography option? Geography. Look, geography, the syllabus for paper 1 is a bit lengthy. So your 65% effort should go towards your paper 1 and 35% effort should go to your paper 2. Now paper 2, I'll talk about paper 2 first. Now paper 2 is very general. The only way you can make your answers a bit more, what you can say, a bit more geographical, though I have never understood how to make an answer geographical. I just wrote what the question asked. I think there is a question, which test series is good? Should I answer these questions or should I answer? We will look into these questions at the end. Acha, okay. Okay. So you see, for paper, sure. So paper 2, if you have a basic understanding of geography of India, which is a little bit more than a general studies candidate, I think you're more than capable of writing good answers. The only way you can write your answers make your answer a bit more geographical is, I can give you an example. I think this time there was a question on interlinking of rivers. People from geography optional paper, if they've looked at the question, there was a question on interlinking. Now this is a very general question. There was a question on economic and I think social implications of negative social implications of interlinking of river. Now this is the question that a general studies student can also answer and a geography optional student can also answer. But how will you make your answer look different? Again, how to make your answer look geographical, I didn't know. What I did is that when I was reading my mains 365 that year, I remember there was a topic on interlinking of river, and they had drawn a specific diagram of Kane Betwa river link. And when they had drawn a diagram of Kane Betwa river link, so you have to draw that diagram of Kane Betwa river link. If you know any other river interlinking project, that's more than sufficient.
So you draw cane, then you draw Yamuna, then you draw cane, then you draw Betwa, and then you draw a line, then you write the name of the cities. Because as a geographer, you should know that there are cities called Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Satna, Rewa, Katni, Umaria, around that only. Then you write example of the dam which is located in that area. For example, in Cane, there is a dam called Dodhan Dam, and I think in Betwa there is a Lower Ore Dam. You mentioned these dams, and these all were given in the main 365. But a general studies student, what he will do is that he will draw the map of India, and then he will draw two rivers, and then he will draw a line connecting canals, showing that this is the interlinking. Now the first approach is that of a geography optional student. The second approach is that of a general studies student. This is how one question was made different. For example, I made my answer different from a general student, general studies candidate, and I talked to a number of people who've given geography optional this year, and their marks were in paper their marks were 110 and 120, and they told me that this is how they had written the answer. So if you're going to write your answer in a very general studies format, it's going to be difficult. Again, there was another question. I can give you an example. I think there was a question on distribution, resources, and production of different varieties of coal in India. So when I asked one person, he told me that he drew a diagram of India, and then he showed that this is the Gondwana coal, and this is the anthracite type of coal in Kalakot, Jammu and Kashmir, and this is a lignite which is found in Neyveli in Tamil Nadu. This is not the way you have to write this answer. For example, what I did is that I wrote bituminous coal, and for bituminous coal, I drew a separate diagram of Jharkhand. I drew a separate diagram of Chhattisgarh, West Bengal, Odisha. I drew a separate diagram of Maharashtra to show these are the different mines where these coals are located. And when it comes to lignite, I do a separate diagram of Tamil Nadu and Gujarat. I think everyone else, mute कर लो यार. So उसमें आप अगर lignite की बात कर रहे हो, then you draw a separate diagram of Gujarat, show a site called Umarsar in Gujarat जहाँ पे lignite पाया जाता है, या you draw a separate diagram of Tamil Nadu to show Neyveli, या you draw a separate diagram of Kerala to show Varkala जहाँ पे lignite found किया जाता है. When it comes to anthracite coal, draw a separate diagram of Jammu Kashmir, Kalakot, show Kalakot where anthracite is found. So this is something a general studies student will not be able to do, because he does not know the diagram of every state of India. And as a student of geography of India, you should know the diagrams of almost all the states of India. At least a very rough figure is needed. Again, if I can show you an example, for example, the question was, I think, the implication of India's relationship with the Bhutan. I think this was the very first question. Don't draw the entire map of India and then the map of Bhutan. Draw a separate map of Northeast, and then you show a map of Bhutan, and then you show what are the implications in Northeast, the chicken's neck, and you mention then and there itself. So this is how you make your answer a bit more geographical. Give examples of case studies. For example, in the question on Panchayati Raj, there's hardly any scope for diagram, so you can't draw a diagram in the question on Panchayati Raj. Give examples of good case studies. For example, there's a good case study of Sampatiye Uike. She's, I think, the Rajya Sabha member right now, but she was the, I think, Gram Panchayat or Zilla Panchayat head in, I think, there is a district in MP called Dillori. वहाँ पे किसी शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वाली पंचायत, आई थिंक वहाँ पे 10th शेड्यूल वाला एरिया है कोई, अब मुझे पता नहीं 10th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल का एरिया है वहाँ पे शायद. तो वहाँ पे उस एरिया में जो पंचायत की हेड थी उसका नाम था संपाती उइके. शी हैड डन एक्सेप्शनल वर्क in providing self-help group connection to everyone, या हर घर में हर हाउस होल्ड में एक हैंड पंप्स होते हैं बनवाने वाला काम, तो इस तरह वाले काम किए हैं. गिव एग्जांपल ऑफ गुड केस स्टडीज लाइक बियरहाटी ग्राम पंचायत ऑफ तमिलनाडु. ये सब एक है बेरेथिंग लबिंग नाम की ग्राम पंचायत इन मेघालय. नाउ ऑल दीज एग्जांपल्स आर देयर इन मेन 365. तो जब हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो एवरीथिंग दैट यू हैव रेड इन योर न्यूज़पेपर्स, in your main 365, in your anywhere you have read. Okay, there's a topic in paper 3, in general studies paper 3, security of India, security वाला, जिसमें border management होता है, state non-state actors का implications होता है, वो सब भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी में यूज होगा.
तो इस तरीके से वहां वाला पार्ट आप इंडियन ज्योग्राफी में यूज कर सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी के आंसर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इशू ये है कि अगर आप रीजनल मैप्स बना के आप अपने जनरल स्टडीज में एक्सप्लेन करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप इंडिया के मैप बना के इंडियन ज्योग्राफी के पेपर में एक्सप्लेन करोगे, देयर इज अ चांस दैट यू माइट नॉट गेट इनफ गुड मार्क्स। और अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊं तो इस साल एक क्वेश्चन आया था इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड तो नहीं था, मतलब क्योंकि उस टाइम पे मुझे याद है कि बेलगाम के ऊपर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में इशू हो रहा था, तो जो कन्नडिगा थे उन्होंने शिवाजी का स्टैचू तोड़ दिया था, और जो मराठी लोग थे उन्होंने बेलगाम में एक क्वेश्चन था ऑन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया, देन गिव एन एग्जांपल ऑफ मुंबई बैंगलोर, मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और केवल ये नहीं कि मुंबई डाला और दिल्ली डाला और दोनों को जोड़ दिया, दिस इज इंडस्ट्रियल, ड्रॉ मैप ऑफ ओनली ऑफ वेस्टर्न इंडिया, और वेस्ट इंडिया के मैप के बाद आप उसमें लिख दो कि मारवाड़ जंक्शन, पालानपुर पड़ता है, वडोदरा पड़ता है। सो दिस इज हाउ यू विल मेक योर आंसर लुक बिट मोर ज्योग्राफिकल, ऐसे ही ज्योग्राफिकल आंसर बनता है, और देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट, एंड ट्राई गिविंग एग्जांपल्स इन ऑल द क्वेश्चंस। जो इस साल एक क्वेश्चन था मुझे याद है उस पे लैंडस्लाइड के ऊपर, आई थिंक आई वुड हैव गिवन एटलीस्ट 5-6 एग्जांपल्स ऑफ लैंडस्लाइड। एक तो आपकी जो तपोवन में इशू हुआ था आई थिंक लास्ट फरवरी को, आप वो डाल सकते हो, और एक उत्तराखंड फ्लड्स के बारे में डाल सकते हो जो 2013 में हुई थी, एक मेचुका में लैंडस्लाइड हुई थी, आई रिमेंबर, उसी साल नैनीताल में भी लैंडस्लाइड हुई थी। सो ट्राई गिविंग मोर एंड मोर एग्जांपल्स, ट्राई टू कोट एआरसी। अब क्वेश्चन आया कि हाउ विल यू कंट्रोल लैंडस्लाइड, सो मैंने जो एआरसी की रिपोर्ट नहीं आई थी डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो मतलब मैंने उसका रेफरेंस दे दिया और बोला कि these can be structural measures, these can be non structural measures through which you can control your landslide. देखो पेपर 2 में you might try to make your notes, but the questions are going to be very general. The questions are as if even a general studies a student can do. So the best thing you can do is collecting examples, diagram, case studies to make your answers look more geographical. और at the end of the day, पेपर 2 में तो आंसर राइटिंग इज मस्ट, क्योंकि पेपर 2 में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, पेपर 2 इज मोर ऑन द एप्लीकेबल साइड ऑफ थिंग्स। सो अगर कोई एप्लीकेबल पेपर है, द बेटर, द मोर पेपर्स दैट यू राइट, द बेटर you might become. I think I remember, अब एप्लीकेशन वाले पेपर में आप अगर you become confident, it is very easy for you to write the answers. अब जैसे मुझे याद है द लास्ट पेपर इन ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज जो मैंने लिखा था, आई रोट इट ऑन 31st of December, रात को 11 बजे से 2 बजे तक लिखा था, न्यू ईयर उसी में चला गया था। तो मैंने उसके लिए कुछ नहीं पढ़ा था, बस मुझे टेस्ट लिखने का मन करा था, तो आई स्टार्टेड राइटिंग टेस्ट, और मेरे को उतना ही स्कोर मिला था जो मैं पढ़ के लिखता था, उसमें भी मेरे को 135 137 मिलते थे, इसमें मेरे को 136 मिला। The only thing is that you will make your diagrams. Again, answer writing practice for your paper 2 is very important. दुनिया में कोई भी चीज हो रही हो जिसका इंडिया से कोई ना कोई रिलेशन है, वेदर आपका देखो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो टॉपिक है पेपर 2 में, जिसमें हम जैसे हम आईआर कहते हैं और हम कहते हैं कि न्यूज से करंट अफेयर से पढ़ेंगे, या हम मेन से 65 से पढ़ लेंगे, इवन दैट पार्ट टू एन एक्सटेंट इज पार्ट ऑफ योर इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि कुछ भी आ सकता है उससे और आपको यू विल हैव टू एक्सप्लेन। तो इंडियन ज्योग्राफी का ठीक है सिलेबस मेंशन है, यू कैन यूज। और रही बात नोट्स बनाने की, मेरे कोई बहुत वैसे नोट्स नहीं थे, मैंने डायरेक्शन आईएएस नीतू सिंह का ज्वाइन किया था, उनके नोट्स बनाए थे, बट अगेन मैंने जितना रिवाइज किया मैंने अपने नोट्स ऐड किए, मैम के नोट्स कम होते गए, I kept on adding more and more of my notes, and eventually I was left with very small set of notes जो मैं बार-बार यूज करता था। पर मुझे लगता नहीं है कि डायरेक्टली बारिंग द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की मतलब कि कहाँ पे कौन सा रॉक पाया जाता है, कहाँ पे धारवाड़ रॉक है, दो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, anything else came to my use. Everything was either from current affairs या mains 65 या PT 65, यहीं कहीं से आया है और मैंने यहीं से आंसर लिखे हैं। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, ना ही मैंने नोट्स बनाए थे प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर, ना ही मैंने नोट्स बनाए थे इंडिया भूटान के ऊपर, ना ही मैंने नोट्स बनाए थे पंचायती राज के ऊपर। अब बेसिक इश्यूज तो हर किसी को पता है, बेसिक इश्यूज जो हैं पंचायती राज के हर किसी को पता है, हमें भी वही लिखना है। द ओनली वे वी विल मेक आवर आंसर लुक डिफरेंट इज बाय यूजिंग मेनी एंड मेनी केस स्टडीज, और वो आपको केवल करंट अफेयर्स मैनुअल्स और न्यूज़पेपर्स इन सब से पढ़ने को आएगा बस। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी मोर और लेस, डिड नॉट फोकस स्पेसिफिकली ऑन नोट्स। थे मेरे नोट्स, आई रिवाइज देम, बट इवेंचुअली दे डिड नॉट कम टू माय हेल्प इवन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, इवन इन माय सेकंड अटेम्प्ट। वही है, आंसर करो। और एक चीज जो मैं दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ वार्निंग, अब क्या होता है कि 150 वर्ड का आंसर लिखना पड़ता है। अब हम लोगों को इतना पढ़ा दिया जाता है, दिस इज जनरल परसेप्शन कि वी हैव टू कनेक्ट इट टू पेपर 1, कि हम पहले 50 वर्ड तो कनेक्शन में निकाल देते हैं, बाद में हम आंसर लिखते हैं तो हमारा आंसर ही 150 वर्ड में 50-60 वर्ड का होता है, उसका हमारा कंफ्यूजन आ जाता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन फोर्सिबली फाइंडिंग कनेक्शंस ऑफ पेपर 2 विद पेपर 1। जहां पे जो क्वेश्चन की डिमांड है, एड्रेस इट
and you will understand. अब ये चीज कि कैसे आंसर ज्योग्राफिकल बनता है, this will only come through more and more practice. So I would suggest everyone to practice more and more. Now when I come to paper one देखो पेपर वन की स्ट्रैटेजी, पेपर वन थोड़ा लेंदी है बट उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी आसान है. पेपर वन इज वेरी कंसेप्चुअल, सो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल, बहुत आसान हो जाएगा पेपर. उसके लिए भी राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए. एक चीज है कि जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने जियोमॉर्फोलॉजी की एक सेपरेट कॉपी बना ली थी. इफ आई हैव द कॉपी राइट नाउ, देखो मेरे पास रखी है शायद, हाँ. अच्छा देखो ये एक मेरी कॉपी थी जो कि मेरी केवल थी. आई थिंक दिस इज बायोज्योग्राफी. तो ये मेरी एक कॉपी थी जिसमें मैंने इधर से नोट्स बना रखे थे. आ रहा है देखो, ये नोट्स बना रखे थे, ये नोट्स चिपका रखे थे. जब ये वैल्यू एडिशन हो गया, देखो ये उसका पेज नहीं है, बट दिस आई समथिंग व्हिच आई एडेड थ्रू वैल्यू एडिशन. ठीक है, दिस वाज पार्ट ऑफ माय वैल्यू एडिशन. और रही कि मुझको लगता था कि किसी किताब में ज्यादा अच्छे से कंटेंट दे रखा है एंड आई वाज नॉट एबल टू मेक गुड नोट्स ऑफ इट, तो मैं उस कॉपी के वो पेजेस ही फाड़ के मैं चिपका लेता था. जैसे ये देखो, ये आई थिंक रूपा मेड सिंपल का एक पेज है, मैंने रूपा मेड सिंपल का फाड़ के इसमें चिपका लिया था. दिस इज हाउ आई डिड. सो दिस इज हाउ आई मेड माय नोट्स. तो ये एक कॉपी थी, किसकी है? ये कॉपी है पूरी बायोज्योग्राफी की. सो अगर मेरे को बायोज्योग्राफी का टेस्ट होता था, देन आई डिड नॉट रीड एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई चीज के नोट्स बना रहे हो, यानी उसको कंसोलिडेट कर लो, एक जगह ले आओ. अब ऐसा नहीं है कि अगर हमें बायोज्योग्राफी पढ़नी है तो हम इंडियन ज्योग्राफी हमने वहां से नोट्स बना रखे हैं, फिर हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा. अगर 3 जगह से पढ़ना भी है, उनको फाड़ो और एक कॉपी में चिपका लो, सो दैट यू हैव वन कंसोलिडेटेड कॉपी फॉर एवरी टॉपिक. जस्ट लाइक आई हैव दिस कॉपी. अब मेरे पास अब रखी है कि नहीं ये पता नहीं, देखना पड़ेगा. आई हैड अ सेपरेट कॉपी ऑन I had a separate copy on I had a separate copy for geographical thought. I had a separate copy for I think ये रही मेरे पास. ये देखो, ये मेरा फोल्डर था फॉर मॉडल्स. तो मैंने क्या किया था कि एक एक मॉडल का एक एक मतलब सेट ऑफ नोट्स बना लिए थे, उनको पंच कर लिया था. दे वर नॉट पार्ट ऑफ एनी कॉपी. सो आई विल शो यू. लेट मी लुक, दिस वाज वन सेट ऑफ नोट्स फॉर दिस क्या है टॉपिक. ये है आपका मैकिंडर की जो थ्योरी थी ना, मैकिंडर और हार्टलैंड थ्योरी. तो ये हार्टलैंड थ्योरी के नोट्स थे. तो मैंने क्या किया था कि जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने उनमें ये किसकी है, माजिद हुसैन की जो कॉपी थी उसको चिपका लिया था फाड़ करके. सो आई डोंट हैव माजिद हुसैन राइट नाउ. ठीक है, माजिद हुसैन फट चिड़ के इधर उधर पहुंच गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई होगी. एंड सिमिलर थिंग हैपेंड विद सविंदर सिंह. तो सविंदर सिंह से मुझे लगता था मेरे पास होगा. देखो ये मेरे नोट्स हैं चैनल मॉर्फोलॉजी के. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड माय ओन नोट्स. देखो ये नोट्स हैं मेरे, ये नोट्स हैं चैनल मॉर्फोलॉजी के. अब लोग चैनल मॉर्फोलॉजी करते हैं, इसमें डायग्राम सब हैं. तो आई विल शो यू सम बेटर डायग्राम. देखो ये वैल्यू एडिशन कर दिया मैंने. मुझको लगा कि पूल्स एंड रिपल्स वाला टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं था, तो मैंने पूल्स एंड रिपल वाले टॉपिक को ऐड कर दिया. एंड देखो इसमें पेपर 1 में नोट्स विल कम टू योर हेल्प बिकॉज दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल पेपर. सो व्हाट नोट्स यू विल मेक. अगर तुमने अल्टीप्लिनेशन पे नोट्स बनाया है तो अल्टीप्लिनेशन ही आएगा. अगर तुमने नोट्स बनाए हैं ऑन लेट्स से डेविस की थ्योरी, डेविस की साइकिल ऑफ इरोजन पे, तो उसी पे क्वेश्चन आएगा. द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी एप्लीकेबल, तो द क्वेश्चंस आर बिकम एप्लीकेबल बट लेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जैसे ये वाला क्वेश्चन है ऑन दिस. ये डायग्राम भी मैंने ऐसे बनाए थे, मैंने कलरफुल डायग्राम्स बनाए थे ताकि इंटरेस्टिंग रहे. और दिस वाज अनदर डायग्राम. तो मार्क कर लिया व्हिच इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट. जैसे सिन्यूसिटी इंडेक्स होता है, सिन्यूसिटी इंडेक्स, तो ये मैंने बना लिया था. और इवेंचुअली व्हेन आई रियलाइज कि चैनल मॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तो मैंने क्या किया कि मैंने सविंदर सिंह के नोट्स को फाड़ करके इसमें ऐसे चिपका लिया. तो आई डोंट हैव सविंदर सिंह एनीवे लेफ्ट. तो मुझे लगता था जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैंने उसको मार्क कर लिया. तो दिस इज हाउ आई डिड माय नोट मेकिंग. तो अब मैंने ऐसे ही बाकी टॉपिक्स को भी किया. सो फॉर एवरी टॉपिक इन योर सिलेबस, एवरी टॉपिक इन योर ऑप्शनल, स्पेशली पेपर 1, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे वो बायोज्योग्राफी हो, इन सब के आपके पास सेपरेट नोट्स होने चाहिए. Give me 1 second. I'll show you my notes of other topics. I don't have it right now. I think. अगर किसी को लगता है कि आपके नोट्स हेल्पफुल रहेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना.
मैं कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा, ऐसी इशू नहीं है, पर आई एम नॉट गेटिंग टाइम, इसके बाद हाँ टाइम ही वही नहीं कह रहा मिल हूँ कि पाता है। तो किसी मेरे से पास, स्कैन करा के करा देना। हाँ तो नहीं, टाइम मिल जाए तो मैं सारी अपलोड करूंगा। आई ट्राई अपलोडिंग, आई एम स्टार्टिंग गेटिंग माय ओशनोग्राफी सून अपलोडेड सून। देखो ये मेरी कॉपी थी ऑन ज्योग्राफिकल थॉट। तो ज्योग्राफिकल थॉट क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्गिश टॉपिक और उसमें बहुत सारे लोगों के फिलोसफर्स हैं, तो इसमें वैल्यू एडिशन बहुत हुआ है कि ये इसमें ऐड कर दिया, वो इसमें ऐड कर दिया। एंड दीज टू वर माय कॉपीज फॉर माय, ये 2 कॉपी हो गई आपकी ओशनोग्राफी पे। तो आई शो हाउ आई मेड माय नोट्स, लोग देख लें तो समझ में आ जाएगा उनको। अब मैंने क्या किया था कि मेरे पास बहुत सारे वो पड़े थी, एटलसेस पड़ी थी एंड दे वर नॉट कमिंग टू एनी यूज। तो मैंने क्या किया कि एटलसेस से वो पेजेस ही फाड़ लिए जो काम आते थे और मैंने उनको अपने नोट्स में चिपका लिया। दैट्स हाउ। तो वो एटलस तो अब गायब हो गई हैं, लेकिन उनके नोट्स प्रिपेयर हैं। तो आई थिंक दिस वाज अ टॉपिक ऑन बॉटम ओशन रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशन। यही क्वेश्चन भी आया था इस साल, बॉटम ओशन रिलीफ ऑफ पैसिफिक। तो ये वाला डायग्राम मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था। और मैंने डायग्राम्स और मैप्स मैंने बहुत बड़े बड़े बनाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज हाउ आई मेड माय डायग्राम। तो ये है, दिस इज एंड कलरफुल थोड़ा सा कर लिया था। अब पता नहीं किसके यूज में आएगा, किसके यूज में नहीं आएगा। एंड देन आई डू वेरी बिग डायग्राम्स, जैसे ये वाला डायग्राम हो गया, ये वाला साउथ अमेरिका का। तो माय नोट्स आर वेरी वॉल्यूमिनस, बट एट द एंड ऑफ द डे दे केम टू माय हेल्प वेरी एफिशिएंटली। तो दिस इज हाउ आई मेड माय नोट्स। वो तो अच्छा था, मैं कल निकाल के लाया था तो रखा था यहाँ पे। सो पेपर 1 का मैं यही स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि हर टॉपिक, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो ओशिनोग्राफी हो, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो रीजनल ज्योग्राफी हो, ट्राई मेकिंग सेट ऑफ नोट्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। और जो नहीं हो पा रहा नोट्स, तो मैं तो यही करता था कि मैं तो किताबों से फाड़ के ले आता था। मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं कि मैं हर टॉपिक का एक छोटा सा नोट्स क्रिएट करूं। बट फॉर दोज टॉपिक्स जिनका मतलब एडिशन नहीं होना है, विच आर वेरी मच स्टैटिक इन देयर नेचर, फॉर दोज यू कैन स्टिक टू अ सर्टेन सेट ऑफ नोट्स फॉर विच यू हैव मेड। और उसके बाद बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये वाली कॉपी बना ली फॉर बायोजोग्राफी, देन आई वाज नॉट रीडिंग एनीथिंग एल्स। आई वाज नॉट एट ऑल रीडिंग एनीथिंग। अगर मेरे को कोई दूसरा भी बंदा आके कहता था कि यार इसमें नोट्स ज्यादा अच्छे हैं, नो, इट इज नॉट गोइंग टू, व्हाट हाउसोएवर यू नो डज नॉट मैटर, however limited you know better will matter. तो ये मतलब this was my strategy for my optional paper 1। और पेपर 1 में थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज पेपर 1 में कुछ अब, और एक चीज और विच इज अ नोट ऑफ वार्निंग, कि ट्राई अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस पहली बार पेपर में, और दूसरा ट्राई कवरिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ सिलेबस। अब इस साल एक क्वेश्चन आ गया अल्टीप्लेनेशन, एंड लोग कह रहे हैं कहाँ से आ गया। लास्ट ईयर जो हैलोवीन स्टॉर्म वाला क्वेश्चन था, दैट माइट बी एक्सपेक्टेड कि वो थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द वेदर आ गया, बट आई थिंक अल्टीप्लेनेशन इज समथिंग व्हिच वाज पार्ट ऑफ द सिलेबस। इफ यू रेड योर जियोमॉर्फोलॉजी, तो आप पढ़ते हो कि अब कोई पूछ लेता कि हाउ आर केव्स फॉर्म्ड, या चलो हाउ आर वो क्या होता है, लेट्स से हाउ आर गलीज फॉर्म्ड और हाउ आर मियांडर्स फॉर्म, तो हर किसी को पता है। अगर आपको मियांडरिंग पता है तो आपको अल्टीप्लेनेशन पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज साल्टेशन, द प्रोसेस ऑफ साल्टेशन, की एक पार्टिकल यहाँ से ये जाता है फिर यहाँ से ये जाता है, अगर आपको साल्टेशन पता है तो आपको अल्टीप्लेनेशन पता होना चाहिए। जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन पे, then you should have studied about the periglacial landforms। और periglacial landform नहीं है अल्टीप्लेनेशन, बट periglacial landform में एक प्रोसेस है अल्टीप्लेनेशन। अब मुझको भी नहीं आता था, so when I wrote about अल्टीप्लेनेशन, I wrote about the process, I connected it to nivation, I connected it to Peltier, then I drew 3 maps। एक निवेशन का मैप बना दिया, एक वर्ल्ड मैप का मैप बना दिया, और आई थिंक देयर वाज आल्सो अनदर मैप। सो बाय द टाइम आई हैड रिटन माय आंसर, आई थिंक आई वाज मोर satisfied with this answer than even questions which I knew very well। तो you should know the capacity, और ये capacity to write unpredictable answers will only come once you have done enough answer writing। मैंने इस साल 5 मतलब 10 टेस्ट लिखे थे for my optional and they came in handy। तो इसीलिए मेरा स्कोर पेपर 1 में is 156, पेपर 2 में I have 150, but I'm more than, मतलब ठीक है, उसमें I could have drawn better diagrams in 1 or 2 questions, but ठीक है। but पेपर 1 में वही है कि be clear with the concepts, और कॉन्सेप्ट्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू नॉट कवरिंग एनी अदर, मतलब कि हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ये लास्ट ईयर आया था। और अगर पॉसिबल है तभी आप ज्योग्राफिकल फिलोसफर्स के नेम दो, स्पेशली पार्ट 2 में इस साल बहुत वेग क्वेश्चंस आए थे, सोशियो स्पेशल, डायलेक्टिक, ऐसे ही पता नहीं। तो मैंने उसमें ज्योग्राफिकल फिलोसफर्स, मतलब जो थॉट वाले लोग थे, उनका नाम दिया था मैंने। ट्राई गिविंग एग्जांपल्स इन ऑल द क्वेश्चंस इफ पॉसिबल, ट्राई गिविंग डेटा इन अ क्वेश्चंस पॉसिबल,
और वही है कि इवन हाँ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी 8 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, 2 आर कंपल्सरी, 3 आर अप टू योर विट्स एंड विजडम कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन इज इक्वली मार्क्स फेचिंग, हर क्वेश्चन मार्क्स फेचिंग नहीं है। और कुछ क्वेश्चन, जैसे इस साल जो एक क्वेश्चन आया था आई रिमेम्बर ऑन जो मैंने केवल इस साल एक ही क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट से अटेम्प्ट किया था, 2 क्वेश्चन मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट से अटेम्प्ट किए थे, और वो तो प्लेट टेक्टोनिक्स पे था, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। एक क्वेश्चन था आपका ओशन, वो क्या था ना, पैसिफिक ओशन के बॉटम फीचर्स, उस पे आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा अगर आपको पता है। और उसके बाद मैंने प्रेसिपिटेशन, वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था उसमें, और कार्बन क्रेडिट वाला क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन था, उसमें बहुत अच्छा नंबर मिलना था। अब आप बाकी क्वेश्चंस पे जाओगे तो वेग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप वेग क्वेश्चंस पे नंबर बहुत अच्छा नहीं मिलता है until unless you've written exceedingly good answers। वही बात वही ह्यूमन ज्योग्राफी पे था। ह्यूमन ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन तो बहुत ही था, मतलब आई थिंक अगर किसी ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो उसने तो या तो सिलेबस के साथ इनजस्टिस किया, या ही severely was out of his mind when he did not attempt that question। जो लास्ट क्वेश्चन आया था जो रेडिकल ज्योग्राफर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, या मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, उस पे क्वेश्चन आया था, या वेबर की थ्योरी पे, ये क्वेश्चन तो मतलब गॉड गिवन गिफ्ट था आपके लिए कि मतलब इफ यू हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन यू वुड हैव गॉटन वेरी गुड मार्क्स। भाई क्या करना था रेडिकल वाले में, 4 से फिलोसफर्स के नाम लिखने थे, उनकी किताबों का नाम लिखना था, उनका वो लिखना था, क्रिटिसिज्म तो आपने पढ़ा ही हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चंस, इस साल डायरेक्ट क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब लोग पूछ रहे हैं कि आइसोस्टेसी क्या है, अब आप आइसोस्टेसी सिलेबस में आपके मेंशन है एंड यू हैवंट डन। अब जब आप आइसोस्टेसी पे आंसर लिख रहे हो, अब आप जॉली और प्रैट का जिक्र नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? हिस्कानन का जिक्र नहीं कर रहे हो। तो वही मैंने बोला कि रीड योर कॉन्सेप्ट्स वेल, भगना नहीं है हमें, वी हैव टू डू इट सैटिस्फैक्टरली। उनका सिलेबस का वो लिखना है, नाम लिखने हैं, और जहां पे ज्योग्राफी, और देखना है कि किस क्वेश्चन में मार्क्स फेच करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नॉट एवरी क्वेश्चन, स्पेशली इन द ऑप्शनल स्केचिंग, देखो जो कंपल्सरी होता है उसमें यू कांट स्केप, बट फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर ऑप्शनल यू हैव टू यूज योर विट टू अंडरस्टैंड कि किस क्वेश्चन में नंबर मिलेगा। इस बार ह्यूमन ज्योग्राफी में मैंने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और उसमें भी मुझे पता था कि बहुत बड़ा स्कोप है मार्क्स गेन करने का। वेबर हर किसी को पता है, यू हैव 3-4 डायग्राम्स, आइसोटोपिन का कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन है, दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट वाज अ ज्योग्राफिकल थॉट। हर कोई कहता है ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ के जाओ, 20 नंबर का क्वेश्चन था वो। प्लेट टेक्टोनिक्स से 20 नंबर का क्वेश्चन था, प्रेसिपिटेशन पे 20 नंबर का क्वेश्चन था। दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई करी है ज्योग्राफी ऑप्शन की, देन डोंट यू एंड क्राई कि यार टॉपिक्स ऐसे जगह से आ गया, चैनल मॉर्फोलॉजी से आ गया, या डेरिवेशन क्रोनोलॉजी से आ गया, उसमें रोने का फायदा नहीं है। अगर यूपीएससी आपको 20 मार्कर्स इतने आसान आसान टॉपिक्स पूछ रहा है, कार्बन क्रेडिट्स क्या है, अब बताओ, आप कार्बन क्रेडिट तो आप बैठे चलते अखबार में पढ़ते हो। What are carbon positive, carbon negative countries? Give examples. You're done. Such a good question. और फिर रेडिकल ज्योग्राफर्स में गिव एग्जांपल्स ऑफ हार्वी पीट, रिचर्ड पीट एंड देयर बुक्स, सोशल जस्टिस एंड सिटी, ऐसे ऐसे बुक, आसान आसान बुक्स के नेम है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई मतलब जैसे टाइम ज्योग्राफी पे पूछा था यूपीएससी ने क्वेश्चन, बिल्कुल ही हिला दिया था हर किसी को, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वंस यू डन इट वेल यू विल डू वेरी गुड। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इज नॉट गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज टू स्कोर, इट्स ओनली if we've done serious studying of all the topics which are there in the syllabus for paper 1, you will do exceedingly well in paper 1। I think मैं थोड़ा सा डिटेल में चला गया, but I think चलो ठीक है, चलता है। Could I open the floor to all? Many questions are there in the comment section. तो आप किसी को भी कोई डाउट है तो you can unmute your mic and ask me many questions. Hello sir, I am Shams. हाँ भाई बोलो। Sir, how did you keep yourself motivated when you know that the geography was not performing well at that point of time, yet you could get the score of 302? Generally, we have that perception that it's not scoring well, and sometimes it demotivates us. How did you keep yourself motivated, and how did you revise all those bulky books that you have made, sir? Yes, these are the two questions. देखो, bulky books can only be revised once you know there is a fear of test in next 2-3 days. If you know Yes. that there is a test coming in the 2-3 days, you will study, and that is one beauty of test series, ठीक है? Apart from the fact that you have done answer writing practice with the test series, ये another beauty है that you will keep yourself। और एक चीज बहुत अच्छी होती है with the test is that once you have done once you have read it once for the test and you know the test is tomorrow, you will revise it again। Otherwise अगर टेस्ट नहीं है, you read it once, you leave it,
हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया. With the test you will revise it at least once. और रही बात how to keep yourself motivated, you keep focusing on what you have done, what is your mistake. Don't focus on how the people are performing. There's always people, last year I think political science में केवल एक ही के शायद 300 पेपर आए थे. So people did not start questioning कि political science is not doing well, ये that's all. Even if Anthro is doing well, not all the geography people leave geography and go to Anthro, do they? Yes. ऐसा तो है नहीं. तो बेसिकली हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, मेरे लिए क्या था कि आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस सोशल चैटर. मैं तो रहता भी नहीं था ओआरएन में, सो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट सोशल सर्कल, बट आई डिड न्यू हैव दिस थिंग एट द बैक ऑफ माय माइंड कि लास्ट ईयर हाईएस्ट शायद 287 गया था आई थिंक रैंक 12 के. तो वो रहता है, बट अगेन you can't do anything about it. And I've always said one thing, that think 1,000 times before choosing an option, and after choosing an option, don't change it. Don't think about see some other option is doing well, some other option is not doing well. The only time I thought about changing my option was after I could not make it to the final list last year जब आया था result September 24, 2021 को. But again I was told कि यार तुमने तो basic तो पढ़ ही दिया है, you have 251 score, ठीक है. बाद में पता चला मुझे, so you don't have to do anything else. अब रही बात हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, वो वही है कि यू डू टेस्ट. इफ यू कीप स्टडीइंग योर ऑप्शंस, पढ़ाई ऐसी चीज है जो जितना करता है उतना मजा आता है, जो नहीं करता उसे मजा नहीं आता. सो आई वाज कंटीन्यूअसली स्टडीइंग इट. आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम, सो आई वाज कंटीन्यूअसली स्टडीइंग इट, राइटिंग टेस्ट. आई वाज गेटिंग गुड मार्क्स व्हिच केप्ट मी मोटिवेटेड अगेन. And do not go off track your schedule. The moment you start going off track to schedule, it's like you're climbing the mountain and then the next day you're coming down again. You start climbing mountain, because you have to climb 1,000 mountains. If you're going to do it to every mountain, you won't be able to reach to your conclusion. So the best thing about staying motivated is stick to your schedule. Whatever you have to do, keep completing those targets that you have fixed for yourself in geography. और रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन मेरा इसलिए होता था कि मुझे पता था कि अगले दिन टेस्ट है. Every week I had a test, so I was focusing on my test, and I had focused more on my geography. मैं बता तो रहा हूँ कि मॉर्निंग का 5-6 घंटा जो पहला होता था, it was reserved exclusively for geography. So I was giving like more than 60% of my general studies time to geography. So I had made a conscious decision कि इस time geography focus करना है. This is how I did my bulky notes. Hi sir, I'm Rubashkana from Dharmaburi. I have a couple of questions and one request. Yes. Yeah, how did you refer for the current affairs with specific to geography optional apart from the Mint and the Indian Express? Nothing else. I did not read current affairs specifically from the point of view of writing in geography. Whatever came to me on that day about examples and everything, I wrote it. Also for paper 1, you will not find many examples. For paper 2, you might find with respect to India, but I did not specifically read. For example, even the question on interstate border dispute of India, which came in paper 2, I had read it for my general studies, but eventually I realized that this can be used in my optional. So then and there itself, I thought I would write this answer, because I can write an answer because I had studied for my GS. I wrote it for my optional. So I did not specifically study anything apart from Indian Express and Mint and Main 65. Apart from that, nothing specifically for geography. I did not read geography, and I did not read any other geography-based magazine like Down to Earth. I had subscriptions of all of those, but I did not find time for reading them. Yes, sir. And second question is specific to geography optional. What kind of coaching or self-study you did, sir? For geography, देखो ऐसा था कि in the beginning मैंने डायरेक्शन IAS है एक, I think you might have heard about it. Sorry to interrupt, sir. I don't know Tamil. I'm from Tamil Nadu. I don't know Hindi. I'm from Tamil Nadu. Sorry. I'll speak in English. So for geography, when I came to Delhi, I had two options: either go with Shabir sir or go with Neetu ma'am. I hadn't heard about Himanshu sir back then, so it was a toss of a coin, and I decided I'll do my geography optional from Neetu Singh, direction IAS. Eventually I realized her notes, I thought her notes were not sufficient for me to cover up everything. So I went to a teacher by the name of Ajay Raj Singh. I think he was then teaching he has his own coaching institute called Geographia IAS I think institute. So he made video lectures, and I did not want to attend classes because I thought I was not doing well, studying in classes. So I got those videos of geomorphology, climatology from him. And when during the first year in 2019, I could not clear my prelims, I had entire year during which I made all these notes, which I showed you, these notes. I made after
after, these are handwritten notes which I made after seeing his videos. So these were the notes that I made. In my first attempt, I could not revise them well. In my second attempt, since I was doing test series, I was able to revise them well. And this was my strategy. And with respect to paper 2, I made a regular updation to my notes. So if I can talk about the coaching, it was Neetu Singh, and after that I complimented her with the notes that I made from the video lectures of Yasharth Singh. But eventually I realized that even he was lagging in some aspects. So eventually when I was reading it more and more in here and there, I tore out pages from Sabinder Singh, I tore out pages from Majid Hussain, I stick it to my notes. This is how I did. This is people, who clear it in the third attempt, they actually do it. We have a lot of time at our hand, we're not doing anything, and I was not doing anything else. I was sitting at home, I had everything available with me, so I was just tearing pages from here and then and sticking to my notes. And eventually by the end of my second attempt, when I could not clear it, I knew I had my notes. But even then, in my third attempt when I was studying it, I did a lot of value addition. For example, if you see this copy of mine, this is geographical thought. When I started my third attempt preparation, this copy was approximately this. But eventually I added value by this amount, if I can give an example. So in every copy there was some value addition here and there, and this came from other sources. For example, for geographical thought, there's a website called EPG Pathshala. There are good articles of geographical thought. So somebody told me about that, so I started reading those articles, and I realized those articles are very good, especially when it comes to critical analysis of geographical thought. So here and there value addition kept on happening. But when it comes to coaching, I talked about those Neetu Singh and Yasharth Singh, and I took the test series of GS score Prince Mishra sir, and that's how I wrote around 10 tests. Yes, sir. The last kind request, just for motivation purpose, sir. Your selfie after second attempt. That is Just a for very motivation purpose, sir. Because only few people are here. Let me check if I can find it. No, I show it, and everyone then takes a photo, and if things go viral very very quickly for me. Okay, so I'm He is a little asking repetitively in the comment section regarding your selfie. okay. One second. Let me find it if I have it. No, that was a very bad day of my life. So that was the worst phase of my life. But but sometimes even the worst phase takes you to your best one. Where do I have it? I Because might after have seeing it. that photo, we can have that complete circle from the down to top. No, you will do well. This was a selfie. Okay, this was a selfie that I had taken. Okay, this was a okay. Okay, this was a selfie that I had taken, and this one I had taken around 24th September 2021 at 11:44 p.m. around 15 minutes before midnight, and I had Show it cried again. had my share of crying. But you see, everyone goes through that phase. Some people are lucky enough to clear it in the first attempt. There's legends, real legends. But for the majority of us, once we are not able to do it in the first or second attempt, it's a shock. And last year, since I was expecting it so much, again the same thing. Academics, we have been so great at academics that we'll clear it in the first attempt kind of attitude when it comes. It'll kick you very badly. I thought, no, once I had this habit of writing answers very well, very very good, and I had humanities in my class 11th, and I would have written excellent answers. They would have given me excellent marks, I thought. And when the results came and you not even find your name in the list, that is a big kicker. So that was a bad moment. But again, this is the lowest that you can reach. But again, this is the simple thing. What anyone can take from here is that you can go from your lowest point to your highest point within 7-8 months. I think the results came on March. So how many days? October, November, December, January, February, March, April, May. 8 months. So 8 months and 3 months of hard studying without worrying about the things in the life, without worrying about what you're giving up, without going through the phase of FOMO, fear of missing out. I think there's always opportunities for those who want to achieve something. So that's how. Thank you That's for what being very supportive. Hello, sir. Hello, who's this? Sir, I'm Shivam. I have one question regarding the geography optional. Yes. Sir,
during the mains time, how can you recall all those points? There was too much content. Just like Pratham Kaushik sir gave a strategy that you can use pointers, and sir, I personally face the problem that there is too much content. Although I revised, but recalling too much content at that time and revising in those 5 days is a uphill task. Can you suggest some measures? Look, Shubham, right? Yes, sir. Shubham, look, there is no alternative to mugging up things. अब mugging up कैसे होगा? For example, the things which are conceptual. For example, if I were to ask you today, what is water erosion? You don't have to mug it up because that is a very conceptual thing. Once you have understood the concept, you don't have to revise it, remember it. But for some other concepts which are difficult and at the same time conceptual, उनमें तो revision होगा. For example, even I could not recall so many things when I gave my attempt last year. And this was because I had revised it just 2 times, once during the 3 months period and once before the five days period that we get, and hardly I was able to revise everything. So I fell flat there. That was a major serious problem that I faced. This year when I took the test series, I would have revised everything at least 4 or 5 times, and those 4 or 5 times over 2, 2, 3 times will do wonders. That is the only thing. And how do you revise it? Again, I did not make any pointers, specific pointers. I had my notes. I used to open them and read them, whatever I had written them. I did nothing else. But again, I revised it many times. So if you take even the small revisions, I would have revised it by 7, 8 times by now. Because if you have a test coming up, for example, on Saturday of geomorphology, so you would have done geomorphology even, let's say, in the evening. You have a test in the evening. And even if you have done your revision by the afternoon on that day, between the afternoon and the evening, you would have revised your book at least one more time, just a brief glance. If you count even those revisions, I would have done revisions at least 7, 8 times. So revision is the ultimate key. You'll have to revision, and this is the hard work that you have to put in. Okay, I don't know about pointers. Even I think, watched his video, but I tried to make pointers, but I'm not very successful at making pointers. I think that I have a very comprehensive way of studying, and by making pointers, I thought I was leaving out some major topics, some point here and there. So what I did is I made my notes and I revised them at least 4 or 5 times, the major revisions, because once you're revising it for the sectional test, and then you're revising it for one full length test, then you're revising it for another full length test. So 3 times revision you've already done there. And then once I did the revision before exam, I think around December 25th, 26th, I started my last revision of my optional. And once you are into those 5 days period, I would have revised it at least 2 times. At least the physical geography, I revised it 2 times. Indian paper 1 I revised 2 times, but paper 1 I revised just once, because paper 1 is more or less general. So that's how I did it. I think revision is the ultimate key. If you don't revise it, even I don't remember last time I did not revise it. I was finding difficult to write the points even on the fronts question. Now fronts is such a conceptual topic. I had difficulty writing points on the fronts wala question because I had not revised it well. So even a lot of points a lot of people when they make notes, they say when we come to revise it again, we're not remembering it. Points se kuch nahi hoga. You have to make, even if you're making your pointers, you'll have to revise it at least 2-3 times. 2-3 बार के revision से देखो, general studies का तो ऐसा है कि 2 बार revision कर लो, तो you will be able to write your answers. And even when you write your answers, जो तुम्हारा competitor होगा, he would not have written such good answers कि मतलब वो तुम्हारे उसके बीच में बहुत बड़ा differential आ जाए. But for your optional, जो तुमसे compete कर रहा है, उसने अगर 4 बार revise कर लिया, तो वो तुमसे 50 नंबर आगे चला जाएगा. That is an issue. So you have to focus on revising your optional, and that's why from the very beginning, from the first interview that I had given after the results, I've been telling people कि get your options on your fingertips. And optional fingertips में तभी आएगा. I was able to recall points इसलिए कि अगर मैं मेरे 12 घंटे की स्टडी साइकिल देखो तो 6-7 घंटे तो ऑप्शनल के लिए थे. The remaining time 3 घंटा मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग में जाता था, और बचे 2-3 घंटे अगर बच जाते थे तो वो मेरा जनरल स्टडीज था. जनरल स्टडीज पे तो आई वाज नॉट फोकसिंग लॉट ऑफ, मतलब जनरल स्टडीज पे तो इतना डिफरेंस नहीं बनता, बट आई वाज फोकसिंग ऑन माय ऑप्शनल. एंड देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सबका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो, तो सबको अपनी पढ़ाई उसी के हिसाब से मॉडरेट करनी चाहिए. बट पीपल फ्रॉम ज्योग्राफी बैकग्राउंड, अगर आप में से है, जैसे शुभमी भाई है, लग रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनली है उनका, यस सर. तो इतने सारे लोग हैं इधर, उनको पता है कि ज्योग्राफी थोड़ा सा हैवी ऑप्शनल है, स्पेशली पेपर 1 रिक्वायर्स अ बिट ऑफ एफर्ट. तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम दो.
you don't have to you have to give at least 6 or 7 hours in your geography. Okay, Okay, मुझे sir. लगता था, so I was the first hour of my preparation, I think 8:30 I started studying. I think till some days even till 2, till 3, till 3:30, till 4 I was studying only geography. So geography requires effort and you'll have to give that effort. अब ऐसा नहीं कि 3 घंटे पढ़ लिया, pointers बना लिए तो हो ही जाएगा selection. You'll have to revise it again and again. There's no alternative. And sir, second, one more question regarding this only. Sir, the role of previous year question. Sir, actually, from the book, when we read, there are certain previous year question which are not available in book, and we have to prepare it by ourselves. Like even if we go by coaching material, they don't cover too much previous year question. So while framing our own previous year question, answers of previous year question, so somewhere I feel like, okay, previous year question, I am not able to attempt it good. So can you suggest something so I can improve on that front? Yeah, previous year question paper मैंने कभी I did not write previous year questions a lot. I started writing in the beginning, I think around October 13, 14, 15, 16 I started writing some optional questions, and I just looked at the options, what kind of questions are being asked. Look, geography is such a dynamic paper that hardly we find that last year previous year question paper are repeated. That's at least my perception. There are so many options where people say that questions from last year are repeated, like for example I think sociology or PSIR even. So I don't know what happens in those options, but I know that geography is such a dynamic paper that hardly questions, okay, there might be 1 or 2 questions which are repeated, but I haven't found that large percentage of questions are repeated. But what you can do is that you can look at the type of or the nature of questions that are being asked. Are they? Yes. Yes, Sir, sir. what was your daily schedule 2-3 months before the mains exam, and how many tests you solve for daily you solve for mains? मैं उसका आंसर कर देता हूँ, फिर मैं आपके में आता हूँ. I think Akshay, right? Okay. Okay. So अब देखो, I just simply had a look at the questions papers and realized that Okay, these are sir. the kind of questions which are being asked. By looking at the question paper, you will realize that some questions are being critically analyzed type questions. So for them, you'll have to understand every concept in a critically analysis. For example, Kober's geosynclinal theory. Even if you know Kober's geosynclinal theory, you will not be able to get marks if the question is about critically analyze it. So critical analysis becomes important then. Or Davis cycle of erosion, or Penck cycle of erosion, or LC King cycle of erosion. You'll have to do the revision in terms of your critical analysis. So these are some inputs that I took, but I did not write answers like that from the previous question paper very much. I think I would have written at least 4 or 5 questions. That's it. After that, I was doing only test series because I had this preconceived notion at the back of my mind that questions are not going to be repeated. And that is a very positive thing, because then you study even the concepts which have been asked previously. Again, then you think that okay, this topic has been asked, and so I don't have to study. कितना टाइम होने के बाद बुक पढ़ने के बाद नोट बनाना चाहिए सर? क्या आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर? बोलिए बोलिए. सर बोल रहे हैं कि कितना टाइम बुक पढ़ने के बाद नोट बनाना चाहिए? अगर एक बार पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फिर नोट क्या बनाना चाहिए मल्टीपल रिवीजन के लिए नेक्स्ट बार? I think at least once if you have understand the concept, and best thing तो ये होगी at least 2 बार पढ़ लो, तो 2 बार पढ़ने के बाद your concept would be very you would have understood the concept very well, and then you can make your notes. But at least एक बार तो पढ़ना ही है. But पहली बार नोट्स पढ़ के पहली बार पढ़ते हुए नोट्स नहीं बनाना चाहिए. Then you will realize कि हर चीज ही important है और इतने मोटे नोट्स बन जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है. एक बार आपने जब 2-3 बार पढ़ लिया तो आपने नोट्स बनाए, and then once you read it again you will do more and more value addition. तो आपको लगेगा कि सर बुक ले. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताओ कौन बोल रहा था? सर आई एम प्रभजोत. अच्छा, मैं उस वाला मैं एक सेकंड में पिछला वाला आंसर तो कंप्लीट कर दूं. आई थिंक हाँ सर बोलिए ना. हाँ ये सर बोलिए. तो उसमें ऐसा है कि सर एक बात सर, एक्चुअली आई हैड जियोग्राफी एज माय ऑनर्स सब्जेक्ट, सो थोड़ा कंसेप्चुअलिटी है, तो उनके बाद क्या करना चाहिए ये मुझे समझ नहीं आ रहा. हाँ, उसके बाद अगर आप बना सकते हो तो इट्स बेटर, एंड यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर नोट्स 2 days बिफोर योर मेन एग्जाम, या एटलीस्ट 5 day जो व्हेन यू हैव वंस यू हैव रिटन
your general studies, अब 5 ही दिन है, अब 5 दिन में किताब कैसे कंप्लीट होगी? So your notes will come to your rescue. So if you geography optional, then you have understood the concept, और पहली बार पढ़ के ही बना लो, कोई इशू नहीं है. पर ये तो पर्सनल डिसीजन है कि how much you are comfortable with geography enough that you can make your notes. ये तो पर्सनल डिसीजन है. सर एवरी टॉपिक पे ही क्या नोट बनाना चाहिए पहले से ही सर? नहीं, हर टॉपिक पे नहीं बनाना है, but there are some topics which are covered in the book by delineation chronology. I think everyone should make notes on that issue because उसका जो सविंदर सिंह का chapter है, it's very boring, it's very lengthy, and how can you read all of that? So for those topics you can make notes. और कुछ topics जो आपको पता है कि अगर 15 मार्कर में भी आएंगे and you will not attempt, उनके ऐसे नोट्स बनाओ कि अगर किसी कभी मतलब बदकिस्मती से अगर 10 मार्कर आ जा रहा है, then you are able to write it. Okay. ऐसे नोट मेकिंग होना चाहिए. Yeah, sir. Good afternoon, sir. Sir, actually, I am first speaking, sir. आंसर प्रभजोत, yes, go ahead. सर मैंने 2018 में ज्योग्राफी ऑप्शनल किया था शबीर सर से. सर अब मुझे काफी टाइम हो गया है एंड नाउ सर मतलब मैं कंसोलिडेट कर रही हूँ अपना ऑप्शनल और विद ज्वाइनिंग 500 प्लस गाइडेंस प्रोग्राम. तो सर मुझे मतलब सुजेस्ट करेंगे मतलब जैसे मैंने अभी सेल्फ स्टडी से ही स्टार्ट करना है तो मतलब ऑप्शनल मतलब पेपर 1 या पेपर 2 मतलब कैसे स्टार्ट करें? जैसे मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है तो मतलब सर कैसे मतलब उसको आगे करूं? जैसे मैंने जो मुझे क्लास में करवाया जाता है वो टॉपिक करती हूँ और साथ में अपने नोट्स को कंसोलिडेशन कर रही हूँ. यही सही है, बट इवेंचुअली यू विल गेन सम मोमेंटम. बिगिनिंग्स आर ऑलवेज टफ, और थोड़ा मतलब बिगिनिंग हो सकती है टफ, मोमेंटम नहीं आता है, यू नॉट इन द जोन, बट इवेंचुअली आप जो कर रहे हैं कि क्लास में पढ़ाया जा रहा है, यू विल फोकसिंग ऑन दैट एंड यू आर स्टडीइंग फ्रॉम योर नोट्स एंड यू आर कंसोलिडेटिंग. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग एंड ट्राई एडिंग व्हाट यू आर स्टडीइंग इन द क्लास इन योर नोट्स सो दैट आपकी एक ही कॉपी बन जाए हर एक टॉपिक की. यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट. Once you have a test upcoming, आप उसी कॉपी को पढ़ लो, उसमें आपके सर के क्लास के नोट्स भी होंगे और whatever notes 500 you have studied और शबीर सर का. मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक टॉपिक को 4 जगह से नहीं पढ़ सकते हो. It's not preferable to read it from 10 sources, but it may become easier अगर आपने वो 4 sources को एक ही जगह चिपका लिया है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है. It becomes manageable for you. It is manageable for you to manage all those sources together. Now I think Yeah, sir. Sir, myself Ajay Andu. My last question is, sir, my last question is, hello, sir, my last question is pending. Sir, मतलब जैसे मैंने 2023 में अपना लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब मैंने वही देना है सर एंड मतलब ज्योग्राफी तो मैं अपना कर रही हूँ और सर प्लीज सुजेस्ट था मतलब रिगार्डिंग द लिटिल बिट स्ट्रेटजी ऑन जीएस मेंस एंड प्रीलिम्स पार्ट. जीएस देखो, प्रीलिम्स अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो प्रीलिम्स पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा ना. तो प्रीलिम्स के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि टेस्ट लिखिए, खूब सारे टेस्ट लिखिए. आई थिंक विजन, इनसाइट्स, आई थिंक दीज आर 2 ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज. उसके बाद व्हेन यू रीच क्लोज टू द प्रीलिम्स, ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक फुल लेंथ टेस्ट लाते हैं व्हिच यू कैन एनरोल एंड गिव इट. सो आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस रहे, सो देयर यू हैव 100% चांस दैट यू आर क्लियरिंग द प्रीलिम्स. जनरल स्टडीज मेंस का तो वही है कि एनसीईआरटीज पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स पे नोट्स बनाने हैं, कुछ पे नहीं बनाना है. और उसका तो मैं यही बोलूंगा कि फॉर ऑप्शनल यू कैन कीप एटलीस्ट 2-3 सोर्सेज फॉर स्टडीइंग, बट फॉर जनरल स्टडीज एक ही सोर्स होना चाहिए. अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटी तो लक्ष्मीकांती पढ़ना है, आपको आपसे आके कह दे कि मेंस में डीडी बसु अच्छा काम करती, नहीं, कोई जरूरत नहीं है. आई हैव 119 इन माय पेपर 2 और मैं बता सकता हूँ मैंने केवल लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा है. वो वही है कि हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल देना है, हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल, फैक्ट, फिगर कुछ ना कुछ देना ही देना है. I think examples are easy to come by when you're reading newspapers regularly. और मैं तो चूंकि 2 न्यूज़पेपर पढ़ा था तो I had sufficient examples. So I had given examples in paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. जहाँ भी बंद पड़ता था मैं एग्जाम्पल देता था. तो मतलब जनरल स्टडीज का तो मतलब यही है कि मैंने एक एक टेस्ट लिखे थे, बट द स्ट्रेटजी वाज सिंपल. I used to write my answers in points. डायग्राम्स पहले से प्रिपेयर हो जाते थे और आंसर टू द बेसिक डिमांड ऑफ क्वेश्चंस, वो बहुत जरूरी है. अब आप इंट्रोडक्शन ही मतलब 150 वर्ड का है तो आप इंट्रोडक्शन 50 वर्ड का लिख रहे हो तो कोई फायदा नहीं बनता है. 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, मतलब वो है कि मतलब इंट्रोडक्शन दो, कंक्लूजन दो, आंसर लिख, मतलब मैटर दो, आंसर, बॉडी, देन कंक्लूजन. आई थिंक 1 लाइन का हो जाए, बट एटलीस्ट 75 to 80%, 85% ऑफ योर वर्ड्स दैट यू आर राइटिंग इन योर 20 मार्कर वो आपके आंसर होना चाहिए. और यू शुड अटेम्प्ट ऑल द 20 क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि हमें एक क्वेश्चन आता नहीं हम छोड़ देंगे. Attempt all the questions. That's it. Okay, sir. For geography optional, it is a necessity go for like magazines like Down to Earth and Kurukshetra.
उनका यार मैंने पढ़ा नहीं था, तो आई थिंक विदाउट इवन रीडिंग देम अगर 306 आ जा रहे हैं, सो आई थिंक उनकी जरूरत नहीं होगी। अब मुझे पता नहीं उनके बारे में, देखो इतना टाइम था नहीं मेरे पास, आई हैड टाइम टू फोकस ऑन माय नोट्स। अब नोट्स ही बहुत हो जाता है, ज्योग्राफी का सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, सो आई रियलाइज दैट आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ गिविंग अप डाउन टू अर्थ और ज्योग्राफी एंड यू का तो सब्सक्रिप्शन मिलता बहुत मुश्किल से है और किताबें भी नहीं मिलती हैं। Then I realized कि since I'm reading 2 newspapers, I think those might be sufficient, and eventually they ended up being sufficient. So I did not read anything. I did not even read Yojana. I did not read Kurukshetra. I did not read any magazine. I read only one magazine, Main 365, and I consistently followed just one online source, Kadda Clutter by Shekhar Gupta. Apart from that, I was watching here and there 1-2 episodes of Perspectives on Sansar TV. Apart from that, but regularly केवल यही चल रहे थे। I think सर जैसे सर जैसे मेरी नेक्स्ट लास्ट अटेम्प्ट है सर, लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम फैमिली एंड आई हैव नो बैकअप प्लान एंड नो, मतलब मैं कोई भी टेस्ट नहीं दिया और क्लियर नहीं हो रहा सर। ओनली माय एम इज टू क्लियर यूपीएससी सर, बट मतलब आप थोड़ा बता दें क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है, मतलब पढ़ना को तो अलग है, लाइक प्रेशर को हैंडल करना इट इज अ वेरी बिग टास्क। प्रेशर आप सोचो ही नहीं उनके बारे में भाई, मेरे घर में भी मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे घर में प्रेशर हो, लेकिन बट स्टिल डोंट थिंक अबाउट इट। क्या मिल जाएगा उनके प्रेशर के बारे में सोचने से, क्लियर तो ना हो जाएगा उनके प्रेशर से। सो डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट कीप योर स्मॉल टारगेट्स एंड यू फिनिश इट। और रेगुलरली लगना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। इफ यू आर गिविंग अप ऑल द प्लेजर्स ऑफ योर लाइफ, इट वोंट मैटर वंस यू आर क्लियर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, बहुत लोग, देयर आर सो मेनी पीपल आई मेट दिस टाइम आफ्टर क्लियरिंग कि उनका 6 अटेम्प्ट था एंड एंडेड अप गेटिंग ईदर आईपीएस, आईएएस, आईएफएस। सो मतलब ऐसा नहीं है कि, बट जस्ट बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डूइंग। जो भी कर रहे हो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है बट कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता है। सो आई रेट कंसिस्टेंसी ओवर हार्ड वर्क हियर। तो अगर आपके पास अभी 1 साल है 2023 तक, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे चाचा की शादी है तो हम 10 दिन के लिए घूमने चले गए, मामा का वो है तो हम उसमें चले गए, दिवाली है तो 4 दिन ऑफ ले लिया, एंड देन यू रैशनलाइज किया दिवाली है तो बनता ही है। This time I did not celebrate Diwali. This time I did not celebrate New Year. सब give up कर दिया। You have to give up certain things in life before you get there. अच्छा, अब हम अजय का क्वेश्चन लेते हैं। Okay, thank you sir, thank you. Good afternoon, sir. Sir, myself Ajay Andu, and I'm from J&K, sir. Sir, I have a question regarding actually general studies mains paper, as it is going to be the question for most of the persons who are likely in the Zoom class. Sir, like take an example of a GS3 paper, as a topic mentioned there is government budgeting or something science and tech. It is itself a big topic, and for beginners like me, like I am just graduated in 2021, we have a question regarding which topic we need to make the notes regarding what thing, like it is every topper will say that simple one thing that sir I will be in Hindi, sir, that I'll be little more comfortable regarding that. सर जैसे हर कोई टॉपर को हम लोग सुनते हैं, उनका एक ही रहता है, सिलेबस को देख के नोट्स बनाओ, ठीक है। पर सर मैं उस चीज को, मतलब मेरे को वो चीज सर कंफर्टेबल नहीं लगती है, क्योंकि मैंने सर पूरा सिलेबस भी पढ़ा है, पर सर जब एक एक टॉपिक के ऊपर बात आती है कि गवर्नमेंट बजटिंग, वो खुद में ही सर बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पर जब सर उस गवर्नमेंट बजटिंग या साइंस एंड टेक के रिलेटेड मेरे को बात आती है कि मेरे को एक नोट्स बनाने हैं कि मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस के टाइम पे एक ही कॉपी से पूरा जीएस पेपर 3 कर दूं, सर वो मैं बना नहीं पाता हूँ। मतलब वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं किस टॉपिक का नोट बनाऊं। मतलब ये तो है नहीं कि मैंने सिलेबस पढ़ा नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत रट भी लिया है, मतलब जो बोलते हैं कि रटना चाहिए जीएस मेंस का सिलेबस, मैंने रट भी लिया है, बट वही चीज मेरे में सर लैक हो रही है कि मैं नोट्स नहीं बना पा रहा जीएस मेंस के। सर दिस इज माय क्वेश्चन सर। अब देखो यार, हर टॉपिक का नोट्स तो नहीं बन सकता है, बट अगर मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने वो गवर्नमेंट बजटिंग वाला टॉपिक पढ़ा ही नहीं था। आई डिड नॉट स्टडी इट वेल। मैंने बस एक बार बस जनरल मतलब नजर डाली थी कि मतलब दीज आर टॉपिक्स व्हिच आर गिवन इन योर सिलेबस, सो यू शुड डू इट। अब मैंने केवल नजर डाली थी, तो मैंने उन पे नोट्स ही बनाया। मैंने केवल उन्हीं टॉपिक्स और मैंने छोड़ दिया कि अगर गवर्नमेंट बजटिंग और टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आता है, सो आई रीड इट फ्रॉम जो मेंस 365 होती हैं, मैं उन पे आई फोकस्ड ओनली ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक्स इन माय पेपर 3, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नोट्स बना लिए क्योंकि उसके लिए कोई किताब तो अवेलेबल है नहीं, या एग्रीकल्चर वाले टॉपिक के नोट्स बना लिए क्योंकि इन पे भी कोई किताब होती है तो इन पर बहुत एनालिटिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग नहीं होता है, या एफसीआई वाला टॉपिक है उस पर भी नोट्स बना लिए। तो इस तरीके से मैंने बहुत छोटे छोटे एक पेज के नोट्स बना लिए। अब देखो कितना इशू है, कितना नोट्स बनाना है कितना नहीं बनाना है। जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो कि नोट्स नहीं बनते हैं, आप एक बार नोट्स बनाओ,
वंस यू रिवाइज इट अगेन, तुम्हें लगेगा कि कुछ वैल्यू एडिशन करना है, नहीं करना, लेकिन उससे पहले हम क्या नोट्स बना रहे हैं, हमारे कैसे नोट्स बन रहे हैं, ये इसका रियलाइजेशन हमको तब तक नहीं होगा जब तक हम टेस्ट नहीं लिखते हैं. वंस वी राइट टेस्ट वी विल रियलाइज व्हाट वी आर लैगिंग इन टर्म्स ऑफ आवर नोट्स. अगर हमने नोट्स बनाए हैं ऐसे कि हमने मतलब कोई टॉपिक लिख दिया और गवर्नमेंट बजटिंग लिख दिया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द गवर्नमेंट बजटिंग सिस्टम, अगर क्वेश्चन आ गया देन यू विल रियलाइज कि यार मैंने तो इसके नोट्स ही नहीं बनाए, देन यू विल मेक नोट्स ऑफ दैट फ्रॉम द आंसर्स. ऐसे मतलब आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार कितने नोट्स कैसे बनने हैं इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है. अब मैंने कुछ के नोट्स बनाए एंड आई रियलाइज्ड कि ये अच्छे नोट्स हैं, और कुछ में लगता है कि नोट्स अच्छे नहीं हैं. तो उसको क्या होता है कि जब आप टेस्ट दोगे, आप रिवाइज करोगे अपने नोट्स को, तो आई रियलाइज कि यार ये वैल्यू एडिशन हो सकता है. देखो शुरुआत से किसी को नहीं पता होता कि यार मेरे एग्जॉस्टिव नोट्स कैसे बनेंगे किसी टॉपिक के, और नोबडी इज एबल टू मेक वेरी एग्जॉस्टिव नोट्स. तो हम बस वैल्यू एडिशन करके वी गिव आवरसेल्व्स अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन दैट एटलीस्ट आवर नोट्स आर बेटर देन व्हाट दे वर लास्ट टाइम. बस ये हो सकता है. वरना अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स नहीं कवर किए थे, जैसे गवर्नमेंट बजटिंग मैंने नहीं पढ़ा था, बिकॉज आई रियलाइज कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ ना कुछ आई विल बी एबल टू राइट. और जैसे लैंड रिफॉर्म्स वाला मैंने कवर किया था बट डिड नॉट डू इट इन ग्रेट डिटेल्स, मैंने उसके नोट्स बना लिए थे. तो इस तरीके से होता है यार. अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, मैंने उसके नोट्स बनाए थे, बट इवेंचुअली आफ्टर 4-5 रिविजन्स मैंने उतना वैल्यू एडिशन कर लिया कि व्हिच आर व्हाट आई मेड इवेंचुअली इनिशियली, आई वाज नॉट रीडिंग देम एट ऑल. तो कुछ नहीं पता होता कि कितना कैसे नोट्स बनना है, बट वही है, इसके लिए आप टेस्ट ज्वाइन कर लो. द मोमेंट यू स्टार्ट ज्वाइनिंग टेस्ट, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट ज्वाइनिंग टेस्ट सीरीज यू विल नो कि आप जो नोट्स बना रहे हो वो क्या आपके सही में काम आ रहे हैं कि उनमें कुछ और काम की जरूरत है. Yeah, thank you so much, sir. Hi, hello. Sir, you mentioned about like Ken Betwa example. सर मुझे उससे पूछना था कि आप कैसे पता करते थे कि कौन सा सिटी के थ्रू वो रिवर क्रॉस कर रहा है, लाइक नो, तो उससे वो सब डाटा कहाँ से कलेक्ट करते थे? अरे अगर आपने मैपिंग करी है तो यू विल रियलाइज कि यार जहाँ पे मैप ज्वाइन, देखो यार मैपिंग जहाँ पे अगर आपने करी है तो यू विल रियलाइज कि यहाँ पे केन बेतवा पास हो रही है, वहां पे ये वाले शहर है. अब ऐसा तो है नहीं कि आप केन बेतवा मार्क कर रहे हो और वहां पे आप लिख दोगे असम, नगांव और नहीं, लाइक जनरली जीएस के लिए अगर हम प्रिपेयर करें तो हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं. तो जैसे आपने अभी टेलीग्राम जीएस के लिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आई वाज टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शनल में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो बेतवा को यमुना से, तो आपको हमीरपुर में ज्वाइन करना पड़ेगा. हमीरपुर इज डिस्ट्रिक्ट वेयर इट ज्वाइंस. और अगर आप केन को ज्वाइन कर रहे हो तो केन बांदा के पास ज्वाइन होती है. देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन यूपी बुंदेलखंड एरिया. तो वहीं पे ज्वाइन. कम टू नो अबाउट ऑल दिस, लाइक टू गूगल सर्च और गूगल मैप? और मैंने जब मैंने बताया ना, मैं जब नेशनल पार्क्स मार्क करता था, बिकॉज़ नेशनल पार्क कैन आल्सो कम इन योर मैपिंग. और नेशनल पार्क तो आपको वैसे भी गूगल पे सर्च कर लेने चाहिए, बिकॉज आप अगर उसको जूम आउट करोगे या जूम इन करोगे तो यू विल रियलाइज कि क्या क्या जगह पड़ती हैं. तो अब जब अगर आप पन्ना टाइगर रिजर्व को सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके बीच से जा रही है केन. और थोड़ा सा आप ऊपर नीचे सर्च करोगे तो यू विल रियलाइज कि यार पन्ना जो केन रिवर है वो ज्वाइन करती है. देखो उसके अलग भी रीजंस हैं कि मुझे क्यों पता था बेतवा केन के बारे में. आई विल नॉट गो अबाउट दिस. तो वहां से मेरा कोई फैमिली थोड़ा सा रिलेशन है, तो मुझे पता था कि केन बेतवा ज्वाइन करती है. अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट आप मत लिखो हमीरपुर बांदा. आप एटलीस्ट ये तो लिख सकते हो कि आसपास छतरपुर शहर है, आसपास पन्ना शहर है, आसपास पन्ना बेतवा के. तो आपका जो डायग्राम है, उतना सा जो आपने बॉक्स बनाया है डायग्राम का, एटलीस्ट उस वाले बॉक्स में यू आर राइटिंग सम सिटीज टू गिव अ रीजनल पर्सपेक्टिव, इजंट इट? इस तरीके से अब जैसे जहां से बेतवा जा रही है उसके पास हमको इतना तो पता है कि छतरपुर पड़ता है, पन्ना, सतना. अगर पन्ना पड़ता है तो आपको पता है कि उसके राइट हैंड साइड में सतना है, उसके राइट हैंड साइड में रीवा है, उसके नीचे कटनी है, उसके आसपास उमरिया है. Okay, sir, got it. Sir, one more question, sir. Okay, sir, you mentioned that you read 3 hours of like newspaper. So, do you like आप उससे नोट से बनाते थे या फिर बस? नहीं, कोई नोट्स नहीं बनाता भाई. 3 घंटे में अगर नोट्स बनाऊंगा ना 2 न्यूज़पेपर के, तो 6 घंटे में कंप्लीट होगा अखबार. तो how do you still आप डेटा कैसे कर पाते थे सर? लाइक एग्जाम टाइम फिर आप कैसे इस चीज को याद रख पाते थे? भाई कोई अगर डेटा होता है इंपॉर्टेंट, that comes again and again, that is repeated again and again. नहीं आता तो I used to leave it. So daily basis पे नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर को बड़ी कॉन्शियसली पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट आप हमेशा याद रखोगे. और हमेशा अगर आप अब जैसे अगर कोई न्यूज आती थी
और उसी एक कंटिन्यूएशन में कोई न्यूज आती थी तो मैं उसको छोड़ नहीं देता था कि यार ये पता ही है यार, इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है तो पता ही है क्या हो रहा है, मैं उसको भी पढ़ता था, एटलीस्ट एक बार उस चक्कर में रिवाइज तो हो जाएगा इन्फ्लेशन वाला डेटा। पर डेली बेसिस पे नोट्स नहीं बनाते थे अपने पेपर से? नहीं, मैं I have tried making notes of current affairs I think 2-3 years back, और एक 15 दिन में इतनी मोटी कॉपी प्रिपेयर हो जाती है, जब हमारे पास ये सब है पढ़ने को, साला वो भी पढ़े हम। Exactly. One more last question, sir. What were your sources for like mains oriented topics like society, governance, and internal security? These three. Will you please refer the sources for this? Sources for society, governance, and internal security के sources आप बता दीजिए please. देखो, इंटरनल सिक्योरिटी के मैंने नोट्स बनाए थे फ्रॉम वाजीराम येलो बुक, ठीक है, तो अब मेरे पास केवल नोट्स हैं, वाजीराम येलो बुक नहीं है। ओके। फॉर सोसाइटी आई वाज रीडिंग द मेन 365 का जो वो नहीं आता कंपाइलेशन, आई थिंक सोसाइटी के ऊपर। एग्जैक्टली। मैं वो तो उससे काम चल गया। अच्छा, हाँ, उसी से काम चल गया। तीसरा क्या टॉपिक था आपका? गवर्नेंस। गवर्नेंस यार, गवर्नेंस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं यार? वही सब ना, सिटीजन चार्टर वाटर ना वगैरह। हाँ, मतलब पॉलिटिक्स रिलेटेड चीज पे टू एग्जैक्टली। तो उनका कहां से क्या था स्पेसिफिक है? जैसे अब एनजीओ के मैंने यार इंटरनेट से देख के नोट्स बना लिए थे, बट आई प्रिपेयर्ड अ केस स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर एनजीओ। जैसे आप मुजफ्फरनगर वो एनजीओ वाला शेल्टर होम वाला केस नहीं हो गया था, आप उसका एक मतलब बैड एनजीओ का एग्जांपल अच्छे से रखो और एक गुड एनजीओ का एग्जांपल रखो, सो आप कहीं बस वो दो एक एग्जांपल होगा, आप हर आंसर में छेप दो। समझ रहे हो सर? ये केस स्टडी और एग्जांपल आप मेनली पीटी 365 और मेंस 365 से करते हैं ना कॉन्सेंट्रेट? हाँ, वहां से करता था, लेकिन अब जैसे एनजीओ वाला टॉपिक है वो आप मेंस 65 और पीटी 365 में नहीं करते। एनजीओ पे नोट्स बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एनजीओ बना रहे हो तो आप एक बार सर्च कर लो कॉन्शियसली किया सम गुड एनजीओज ऑफ इंडिया, ठीक है। और रही बात सिटीजन चार्टर की, तो उसके नोट्स मैंने बनाए थे एआरसी की रिपोर्ट में, शायद कोई है, शायद सोशल कैपिटल वाली रिपोर्ट है जिसमें ये चार्टर के ऊपर नोट्स हैं। ट्रांसपेरेंसी वाले नोट्स मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, जो क्वेश्चन आता था उसी के हिसाब से हम हैंडल कर लेते थे। और कौन से टॉपिक है गवर्नेंस में? सिविल सर्विसेज वाला की रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस, ऐसे कुछ टॉपिक्स है, उसके मैंने 2-3 पेज के नोट्स बना लिए थे, बस दैट्स इट। उसका कुछ नहीं किया था मैंने, और कोई सोर्स नहीं था, और बस पॉलिटी की जो मेन 365 आती थी उसको ध्यान से पढ़ते थे। ओके, hello hi Yasharth, Ayushi this side. Okay, hello Ayushi. So I got 2 questions for you. The first is like I was going through your background, so it calls for St. Stephen's and then you were economics graduate from there and then you chose geography optional. So how did you deal with the questions during your mock? So maybe in your interview, like you were an eco grad and then you had geography optional. So that's my first question, because I am an engineer and then I did my MBA. So and now I have geography optional. So this is first question. Second, like second question मैं इसके बाद दूंगा, otherwise I'll forget the second question. First question, ठीक है? तो इसका मैंने सिंपल सा आंसर दिया, because I like geography helps in your general studies also, and I always had an interest in geography. मेरा हमेशा था, this was a very honest answer that I have always had interest in geography, and you should take, और मैंने बहुत मैंने बोल दिया था that economics when in college it has a lot of maths, और वो सारी vague maths होती है. I had 100 in my ICSE maths, but even that 100 was not sufficient for me to be comfortable with the kind of maths that is being taught in terms of like cobweb, Cub Douglas होता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले कर्व्स होते हैं. सो आई वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, सो मैंने गिव अप कर दिया. तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट. इवन दिस ईयर इवन पीपल विद इकोनॉमिक्स आई थिंक हार्डली हैव सीन पीपल स्कोरिंग अबव 300, लेट अलोन 280 के ऊपर भी आ जाए तो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा है. बट ये मैंने कभी सोचा नहीं. आई हैव ऑलवेज हैड ज्योग्राफी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, and I always had easy, मतलब आसानी से समझ में जाता था. And the third thing you have to realize is that once we are going for UPSC, we don't have the luxury to know that we are clearing it in the first attempt. So you'll have to choose an optional which you can carry on for at least 2-3 attempts के लिए तो लेके चलना ही चाहिए कि okay, we might not be able to clear it in the first attempt, second attempt, third attempt. So see, even when I was reading it in the third attempt, I was reading with all the interest. I had never lost my interest in geography, no matter whether people were scoring badly or not. So this was, I think these were the 3-4 options that I gave, the 3-4 pointers I said to the interview. In fact, this was one of the questions that they asked me. Possibly they were not happy, so they didn't give me enough marks in my interview. What was the second question?
Well, the second question is like when you are into accounts, right? When you're very good into accounts and you do your graduation and post graduation from premium institutes, like I belong to one of the older IIMs, and like when you're not able to, make it through either pre or means or let's say interview, then how do you second that feeling? Like how do you get How do through you, it? How do you get out how through do it? It's like very depressive, to be very honest. like 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 everyone gets no, like uh, I went through your background. So yes, you are from St. Stephen's, and like they would probably question you that you have been a topper throughout. That's why you got into that institute. And now when you're not able to make through the prelims, let's say, or means, or in your case, you were not able to get through the interview in your second attempt. So like, how did you come out through it? Because you know like that feeling, everyone right? crying, having phases of depression, feeling Yeah. that you have nothing left in the world, and all those kind of feelings that almost every dejected person in this world feels. But again, UPSC has this way of humbling you, and so I think this is a good thing in one way, because this is a great equalizer, because not everyone comes from such a good background. So everyone should have equal opportunities. People who come from state boards, or who are coming from very rural background, they're able to make it in the first attempt. So I think UPSC in this way has been able to make papers, or has been able to create a process that equalizes the differences of background. So I think in that way in one way it is good, but on a personal level it hurts like anything. So once you're not able to clear it, you feel like you especially once you're in the third attempt, I started thinking I'm going on the downhill on the number of attempts, because since I come from general category, I had 6 attempts. So if I was not able to clear it in this attempt, I was on the fourth attempt, and that's like I have exhausted more than 50% of my attempts. So again, that begins to hurt, but again, there's no alternative to it. So I had this goal of going into UPSC, going into civil services, and I had this dream of becoming an IAS officer. And I think that was more than sufficient to pull me through worst phases of depression. But again, having support of parents, my sister, my friends, and having a very supportive family is very important here, because even when I couldn't clear it in my second attempt, they were telling me you have to go till the sixth attempt, so you don't have to worry about anything else. So I did not have to face that pressure from my family. My family was supporting me all throughout this journey. As I told you, they told me that you can go till the sixth attempt, and even if you're not able to go till the sixth attempt, we'll see what happens. So this helped me. But again, my inner determination to get into the services, because last year when I couldn't clear it, I had 16 days, and on that very day when the results came, I had cough and cold, and to get up next morning with cough and cold and to study, because cough and cold, first 2 days hurts like anything. So you have to get up or get out of your bed, and you have to sit back and study. When I hadn't studied for 9 months after my mains in January, and because of that, the 9 months period was extended because of the COVID in May-June period, the second wave, which was very deadly. It was extended to October. So again, that was, and I had it, and when prelims have become so tricky, so it was a tough thing, but you'll have to come out of it if you are determined enough that there is no other thing in your life other than UPSC. You will be able to pull through this Also, I want to bad. mention Well, one thanks a point. lot. That was quite So my informative. question is, so how? Hi, sir. From You that, said I about want to you took mention one point. notes from the min, sir. Who's asking it? Hello, sir. Hello, sir. My question is, how you prepared the perspective in human geography, since it's very different from all the different topics in optional. So it's philosophical. That's why. How did I prepare human geography? You are asking me. Yeah, no, perspective human geography. देखो perspective में what I did is that when I joined the coaching at Neetu Singh, she gave me a set of notes. ठीक है? She gave a very brief outline of almost all the philosophers, whether it is determinism, whether it is possibilism, whether it is neo-determinism, neo-possibilism, environmentalism, and everything. She made very brief notes, and she also told us about different geographers. एक सेकंड में geographers के नाम देख लूं, वरना लोग कहेंगे कि मुझे आता ही नहीं है कुछ. ठीक है, तो जैसे वो कौन सा जोग्राफर, जैसे होमर हो गया, थेल्स ऑफ मिलिशियस हो गया, या डार्विन के बारे में बात हो गई, या what's the name person? Huntington. Ellsworth Huntington. Ellsworth Huntington, या रिटर हो गया. So these are the famous people. उनका मैम ने एक पेज का contribution दे दिया.
So once I finished that coaching, I wrote all the answers from those notes, but I realized that the kind of questions which are being asked are so much beyond the notes that she had given us. So what I did is that I went to the market and somebody told me that there are two good books available. The first book is, so I had this basic set of notes. उसके बाद मेरे को बताया कि there are two books, as I told you. एक है I think सुदीप तरिकारी की geographical thought की book, and the other one is I think Dixit, R.D. Dixit. So I bought the R.D. Dixit, and that was the best decision of my life when it comes to geographical thought. The book is very easy. The book is very easy to the book is very easy to understand. The book is very pleasing to read. And once you have read it, more or less, you will understand what are the topics which are important for your optional. I read that books and I did not make notes in my first attempt. I read it like a novel. The second time when I started reading it, I focused on some specific key areas like areal differentiation or I think topics like possibilism, environmentalism, उसमें भी same ही contribution थे about these people. What are the determinism में एक और आदमी था ना, who was from who had उसके नाम पे एक ocean current है ना, क्या नाम है उसका, Humboldt, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt Ritter. हाँ, Humboldt Ritter का contribution था उसमें तुम्हारे Kant का contribution था कि how did Kant contribute in this classification of subjects as logical and scientific, ऐसे कोई classification दिया था उसने. So all this, you know, a very comprehensive study आ गई, and then somebody else told me कि there is a website EPG Pathshala, and I think that is a very good source. You go to the EPG Pathshala site, उसमें geography search करो, उसमें drop down आता है, उसमें go for geographical thought, तो उसमें सब topics के ऊपर 10-10 पेज के very easy to understand. और अगर आप उसके references पे जाओगे कि what books they have referred to, one of the books they have referred to is R.D. Dixit also. तो उससे क्या है कि अब जैसे एरियल, अब मैं अगर एक कॉन्सेप्ट की बात करूं, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन. So quantitative revolution, when R.D. Dixit talks about quantitative revolution, he will talk about in details कि this person did this person did this, and eventually when एक paragraph में he will talk about what are the criticism कि उसने dehumanize कर दिया geography को, that all the human emotions cannot be expressed in terms of mathematical equation and all this. तो वो 2-3 देगा, लेकिन but when you go to the EPG पाठशाला साइट, वहां पे एक पूरा का पूरा टॉपिक है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, और अगर आप उसको सर्च करोगे तो उसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दे रखे हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के. तो अगर क्वेश्चन आता है, इससे एक बार आया भी है कि राइट अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, सो यू टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, यू राइट नेम ऑफ 2-3 पीपल हु सपोर्टेड इट, लाइक हार्वी ने सपोर्ट किया था. आई थिंक बर्टन वाज आल्सो अ पर्सन हु सपोर्टेड क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन. तो आप उनका मतलब जिक्र कर दो. उसके बाद आप क्रिटिसिज्म लिखो, तो उसमें 6 क्रिटिसिज्म है, 6 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो उसमें क्रिटिकल एनालिसिस मिल जाएगा. तो दीज वर द 3 सोर्सेस. बट चूंकि हर कोई नीतू सिंह के यहाँ से तो पढ़ता नहीं है, सो आई वुड रेकमेंड रीड R.D. Dixit वेल. 2 बार पढ़ने के बाद उसके नोट्स बना दो, तो एटलीस्ट यू हैव टॉपिक्स, यू हैव नोट्स ऑन ऑल द टॉपिक्स व्हिच आर गिवन इन सिलेबस, लाइक environmentalism हो गया, quantitative revolution हो गया, radical geographers हो गया, या liberal geographers हो गया. Then go to the EPG पाठशाला site, उसमें भी separate topics हैं on वो कौन सा टॉपिक है आपका, liberal geographers, radical geographers, quantitative revolution के ऊपर separate topics हैं. There is a separate topic on chorology, there's a separate topic on possibilism, separate topic on determinism, separate topic on neo-determinism. ये सब separate topics. I think there are 20-30 topics that given, and the best thing about these topics is that जो R.D. Dixit ने अपनी किताब में नॉवल की तरह से लिखा है, वो जो 10 पेज के आर्टिकल है उन्होंने डायरेक्टली लिखा है. तो this time when the question was asked on radical geographers, I had written names of I think 4 or 5 geographers जिनका नाम तो R.D. Dixit में नहीं था, but they were given in very much detail in EPG पाठशाला. तो EPG पाठशाला in that way is a very academic. जैसे हमारे स्कूल में चैप्टर्स नहीं होते, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, और उनमें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है कि ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये लोग आए, उन्होंने बोला, उसका पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से वो EPG पाठशाला के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं. तो आई थिंक दीज आर 2 सोर्सेज व्हिच आर वेरी गुड, EPG पाठशाला, एंड द सेकंड थिंग इज R.D. Dixit. आई थिंक अगर आप इन दोनों को अच्छे से करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि अब EPG पाठशाला में जो लैंग्वेज लिखी होगी इट इज वेरी डिफरेंट, और R.D. Dixit ने लैंग्वेज अलग लिखी होगी, टू माय सरप्राइज लैंग्वेज ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है. सो यू वोंट फाइंड कि आप 2 डिफरेंट जगह से पढ़ रहे हो. तो देखो, अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर आपको पता होने चाहिए इफ यू वांट टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. अब जैसे कोरोलॉजी मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट यू विल हैव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोरोलॉजी टू अंडरस्टैंड एरियल डिफरेंशिएशन.
और एरिया डिफरेंशिएशन के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स किताबों में नहीं दे रखे होते हैं, लेकिन आई थिंक दे आर गिवन इन वेरी मच। एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है एरियल डिफरेंशिएशन पे। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आरडी दीक्षित में नहीं पढ़ना है, आप आरडी दीक्षित छोड़ दो, आप सिलेबस के टॉपिक्स देखो और ईपीजी पाठशाला पे चले जाओ। बट अगेन आई वुड रिकमेंड, अगर ये वाला टॉपिक चूंकि एक हैवी टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी का, गो टू आरडी दीक्षित एंड देन गो टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला के आर्टिकल्स आर such nice articles. I think that is a very good initiative by government of India. पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और पता नहीं which organization is, but almost all the articles are written by the professors of, I think वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, I think जामिया मिलिया इस्लामिया है, I think very very renowned professors there, they have written those articles. जैसे I think तारुणा गोयल है एक राइटर, मुझे उसी का नाम याद आ रहा है, but I think those articles are top notch. उसमें सारे जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, whether it is radical geographers, whether liberal geographers, whether it is contribution by time geographers, whether it is quantitative revolution, whether it is areal differentiation, सब टॉपिक्स के सेपरेट नोट्स हैं। Yes, we will Sir, one extended question regarding this. हाँ बताओ क्या extended है? Sir, one extended question regarding this. We will conclude the session within the next 10-15 minutes. Okay. Hi sir, I'm Rubash Khanna. Question regarding the Mint. For the Indian Express, I can read from the UPSC perspective, but for the Mint, I'm unable to read from UPSC perspective. If any Mint is available near you, you can explain with that, sir, if possible. Mint for UPSC perspective? Yes. Focus on some areas, like the very first page, the half page that is there in front of Mint. This is the question answer format. Yes. So if you're reading Indian Express, there's an explain section, right? So this is like a mini explain section of Mint. The second thing is that there is an editorial just on the right side of it. Okay. After that, once you turn the page, on that very page itself, there is a set of data that they give. I think on Friday it's called Factually, Simply Facts, or something like that. They give all those data. Read the first page, and then you come to the editorials. The editorials in the Mint are very good. They're usually very pro-government kind of articles, and you'll realize that they also use data, and most of them are basically on economic aspects. So once you've read those articles well, you'll realize that at least economy section you've done well. After that, once you turn the page, there is also something called long story. Long story, you have to be very selective about what you're reading. I remember when I studied between October and December, between January, between the prelims and mains period, there was a very good article there on digital currency. So they had explained about digital currency, why digital currency all of a sudden. They also talked about the cryptocurrency and whether the digital currency would help RBI or not. So these kind of articles you have to read. If there's an article on some merger and acquisition, you don't have to read it. Okay, there was also. Can you talk about? Let me complete this. I'll come to your question. I think Sandra. Okay, I'll come to your question in just 1 second. And then you move ahead, and then I think on the second page of Mint, there's also some government news. You can do that. You'll realize that those are some sections which cover a lot of our economy. Apart from that, just give a read. You don't have to read the section where they have covered articles from Wall Street Journal. They won't come very handy to you. But again, for the sake of examples, if I think there was an article about the chip shortage. So I was able to recall that article and write example of chip shortage. So that's how you read. Thank you, sir. Let's go, Sandra. Sandra, question kya tha? I want. Hello, can you hear me? Ahead. Yes. Go ahead. Ask your question. Can you talk about ethics and your strategy about ethics and essay? Ethics, I don't know. I am the right person. You asked me your ethics. I have 99, not a very good score in ethics. But generally, for all the topics in the syllabus, you make 1-page notes. Give examples there. For example, with respect to integrity or attitude, you make notes of 1 page, and you give example, and you revise it more and more. But for ethics, I can tell you that ethics paper is a little lengthier as compared to the other GS paper 1, 2, 3. For those practice test series, get any test series on the market. I think I did the Lukman thing, but you can choose. You can go for any and write a test. Writing test is very important. This is one thing that I lacked in this attempt. That's why I've ended up with a score of 99. But I would suggest going for test series in ethics. This is a 3-pointer strategy: notes, example, and test series. Sir, what is your strategy to prepare for the paper 2, sir? And have you prepared DR Cooler paper 2, sir?
For paper, I had Fuller for some parts where I thought I could use Fuller. I just stuck out pages and stick to my notes. That's what I did not read every topic from Fuller, and you'll realize that Fuller is a very static book, and the kind of questions which are being asked today, very difficult for you to find direct questions from Fuller. But Fuller can be used in terms of supplementing your diagrams. If there is a diagram on some tribe, or there is a diagram on distribution of a particular indicator like sex ratio of India, or worker population ratio, that those diagrams you can pick from Fuller. Apart from that, I did not use Fuller very much. Next question. I have very less Sir, time, you so didn't qualify for okay, sir. Sir, you didn't qualify prelims in your first attempt. So what are the changes did you incorporate in your second attempt? Just one change: writing, giving more tests. I would have done at least 80 tests of prelims, and I had if you do 80 tests, and I read the solutions of almost all the questions, whether I did them correctly or whether I did them wrong. And after I had 80 tests, every coaching institute comes with around a full length test before prelims. I would have done those tests, at least 10-15 tests I had done like that. That's my thing. So I would have seen at least 10,000 questions, topics of UPSCs in question answer format, combined them with current affairs, combined them with what you are reading in your basic text. I think these three things are sufficient for you to help qualify prelims. And I went from 83 in my first attempt to prelims to 120.53 of 6.7 in my second attempt in prelims. So was it a year-long test series, or what? Was it a year-long test series, or from the month of? No. Yes, I think I took a year-long test series, but eventually I did almost all the questions in the last 3 months, 3-4 months only. So for geography optional, how did you space your tests? And sir, whenever you were getting the evaluations, how were you working upon it? Could you just put some insights on that? For geography optional, I did the test as they come. For example, every test was almost a week away. So I had a week to prepare for every topic. That's how I spaced my test, depending upon the will. Look, if we go by our will, we will not want to give another test for 10-15 days. Make notes. We have to study according to schedule, and discipline is tough. And if you are following a test series, if every test is after 1 week, you will be able to do it well. About how I incorporated from the test series, if they told me that okay, I should start writing in points, I started writing in points. If okay, this answer I could have given more example, I incorporated that in my answer. But more or less, not many inputs were coming, because I was not doing very badly in my tests, so I can't talk about that. But more or less, they did tell me that sometimes I'm missing the main key issue of the question. So what it inspired me was to focus on the key demand of the question very well. So read your questions well, and that's what I was doing. That's all I did. I did not read them for some questions. If I was not able to answer one question, I remember there was a question on the criticism of the coral reef theory of Darwin, and I was not able to do it very well. So when I got the model answers, I read those topics from there, which I could not answer well. That's how I did it. Sir, question regarding दोबारे join करना. Yeah. What? I'm saying session conclude करना है या दोबारा continue करोगे? कितना लंबा और हो सकता है? अभी तो ये बंद हो जाएगा, 10-30 मिनट और चलेगा इसके बाद. नहीं, 10-15 मिनट और कर सकते हैं अगर करना है. After that I have to go. मुझे. Yes, sir. Sir, few questions about geography, sir. Sir, we were talking about EPG Pathshala, the source for study. Sir, I have one more question regarding. Sir, there are certain questions like application of theories. Okay, just like von Thunen, application in Indian context, or maybe Weber, or maybe Christoller. Sir, these are, I find that I can't able to prepare this from this conventional sources. They don't give the current perspective. So how we can go about this? Yes, sir, you are audible. Yes, now we'll do it for 10-15 minutes. After that, मुझे जाना भी है, so I won't be able to continue it. Okay? Sir, one question. Sir, for optional. I'll answer the question जो उसने पूछा था कि how to, क्या question था यार आपका? Sir, it's regarding application of theories, just like von Thunen, Weber, Christoller. I find when you are making notes of those theories, write down from any book. देखो 2 बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, एक के सिद्धार्थ की मॉडल्स एंड एप्लीकेशंस है, और एक माजिद हुसैन की. जिससे आपको आसान लग रहा है आप दोनों बुक्स ले आओ, जिससे आपको आसान लग रहा है एप्लीकेशन आप उससे लिख लो. बट व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग इट विद द कॉन्शियसनेस कि वो काम ही आना है आपके.
एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन आता है। अब मॉडल पूछना उन्होंने बहुत का हद तक कम घटा दिया है। They will only ask you application. So application तो अच्छे से रटना ही है, रट लो आप। जैसे हम क्लास 10th 12th में चीजों को रटते थे ना, आप एप्लीकेशन को उस तरीके से रट लो। अगर मेरे पास कोई एग्जांपल होता तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें ये देखो, मेरे वन के नोट्स है ये। ओके, तो आई हैड मेड अ सेपरेट टॉपिक ऑन एप्लीकेशन आल्सो, मुझे मिल नहीं रहा है। देखो ये वाला, जैसे आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा एप्लीकेशन, आपने देखा ही होगा। यस सर, यूरोपियन एग्रीकल्चर इंटेंसिटी। हाँ, तो और अगर देखो इसमें मैंने वो कौन सी, ये सिद्धार्थ की किताब का भी मैंने फाड़ के चिपका लिया था इसमें, तो आप इसको चिपका सकते हो। और इसमें एप्लीकेशन के नाम पे ज्यादा कुछ है नहीं, बट अगेन एप्लीकेशन आपको आप एप्लीकेशन जो भी इसमें है आप उसको लिख लो। तो एप्लीकेशन, और आपको रटना पड़ेगा एप्लीकेशन, और सबको ऐसे रटना पड़ेगा जैसे यू आर 10 ईयर, जैसे हम 10th में होते थे ना, 11th में होते थे, जो चीज हमको नहीं आती थी हम रट लेते थे। आपको एप्लीकेशन रटना पड़ेगा, बिकॉज नॉट एवरी टाइम एप्लीकेशन इज अ वेरी हैज अ वेरी फोर्थकमिंग अंडरस्टैंडिंग। सो यू विल हैव टू मग अप एप्लीकेशन, और इसको इस कॉन्शियसनेस के साथ करना होगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है एप्लीकेशन, हमको देना ही देना है एप्लीकेशन, बिकॉज एप्लीकेशन विल मेक योर आंसर लुक अ बिट मैच्योर, और उसमें नंबर ज्यादा मिलेगा। सर क्योंकि जैसे माजिद हुसैन की ये जो बुक है, इसमें सर एप्लीकेशन दे नहीं रखी। जैसे मेरे अभी खोल रखी है सर बुक, तो सर जैसे वेबर की एप्लीकेशन दे नहीं रखी, या एप्लीकेशन देते भी है तो सर 1 या 2 लाइनों में दे देते हैं। तो सर मेरे को काफी इंटरनेट पे सर्च करके देखना पड़ता है एप्लीकेशन को। आपको अगर वहां से नहीं हो रहा तो आप इंटरनेट सर्च करो। जैसे मैं जब लिख रहा था प्रिंस मिश्रा सर की टेस्ट सीरीज, तो उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन दिया था मैकुला डोरास का, कि विच आर द स्वेट शॉप्स व्हिच वर्क ऑन द साइड ऑफ मेक्सिको, बिकॉज वहां पे लेबर चीप है। और अगर आप नहीं भी हो रहे तो बताओ, 3 प्रिंसिपल है ना लेबर के मॉडल के। ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, आप उसमें एग्जांपल दो कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हम घटाने के लिए हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी मॉडर्न एप्लीकेशन ना। आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को घटाना चाहते हो तो यू आर बिल्डिंग योर, आप अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटा रहे हो तो आपका आइसोडपेन का साइज बढ़ जाएगा, विद इन विच यू कैन लोकेट योर इंडस्ट्री। दैट साइज विल एक्सपैंड बिकॉज ऑफ इफ यू आर बिल्डिंग लेट्स से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दूसरा, लेबर कॉस्ट का आप एग्जांपल दो, द राइज ऑफ चाइना, द राइज ऑफ वियतनाम इज ऑल बिकॉज ऑफ लेबर कॉस्ट। गिव एग्जांपल ऑफ व्हाई यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे लेबर चीप है। ठीक है। और थर्ड प्रिंसिपल क्या था, एग्लोमरेशन। गिव एग्जांपल ऑफ एनी एग्लोमरेशन भाई, फॉर एग्जांपल एनी मेगालोपोलिस, फॉर एग्जांपल इन जो आपका अमेरिका में ईस्टर्न सी बोर्ड पे आपका जो मेगालोपोलिस है व्हिच रन्स थ्रू न्यूयॉर्क, रिचमंड एंड ऑल दोस प्लेसेस, दैट इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ agglomeration. So many industries are located in India. If you want to give example of Gujarat is growing because of agglomeration. Give examples of agglomeration जहाँ पे बहुत सारी industries are located very closely to each other. तो इस तरीके से आप रियल वर्ल्ड में भी देख सकते हो। देखो कि जो मेन पॉइंटर्स हैं हर एक थ्योरी के, हर एक मॉडल के, are they applicable to any situation in India or the world? That's how you do it. ऐसे ही सोचना पड़ेगा। Okay sir, thank you. Can I ask? Sir, a Can kind I suggestion. A kind suggestion, sir. After the session ends, could you please share your book list? I mean, sources of books for your Telegram channel, sir. I'll share it on I have Telegram channel. I'll share it very soon. I'm not getting time, so I got some time yesterday, so I have a few things, but I'll upload it on my Sir, for optional, make notes on every topic, or which are asked frequently. Make note on those topics only. Not every topic. For example, some topics, Davis theory of Davis, you can do it on your own through books. But for some topics like chronology, do from your notes like this. Not every. It is not complete pure black and white. That for some topics you will make notes. For some topics you will have to study from a book. That is up to your decision. If you think that you can do some topic from the book, you should do it from there. Don't force yourself to do something, to do things because somebody had told you that make notes on all the topics, and don't simply study from book because note making is bad. ऐसा नहीं है. Decide whatever you're comfortable with the book, read from the book, and don't for other topics make notes. Sir, actually in the books they are in the scattered form. So if it is in the scattered form, I think it's better to make notes so that you are able to bring everything together. That's how. Okay. Sir, can I ask a question? Sir, please, my question.
सर माय क्वेश्चन इज आपके GS1 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपके 120 मार्क्स हैं, आपने GS1 का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था इन एक्चुअल मेंस एग्जाम? एक्चुअल मेंस एग्जाम में आई डिड लाइक वन वेरी सिंपल थिंग कि हर क्वेश्चन में एग्जांपल देना है, जहां पे डेटा डल सकता है वहां पे डेटा डालना है। एंड थर्डली आई हैड एन नेचुरल एडवांटेज यार, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शन था, ज्योग्राफी के इस साल क्वेश्चन भी बहुत आगे थे। दिस वाज द थर्ड रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सोर्सेज वही रीड किए थे जो एनसीईआरटीज होती हैं और नितिन सिंघानिया हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। बट अगेन ट्राई टू गिव many facts in your answers. If you're writing very vague answers, उसमें क्या होता है कि always facts are preferable to vague answers. So try giving examples in all the questions. और जो क्वेश्चन बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे अब इस साल वोल्केनिक इरप्शंस इन द रियल वर्ल्ड आ गया, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा एडवांटेज ये हो गया बिकॉज आई वाज रीडिंग 2 न्यूज़पेपर, तो मेरे को मिनट में याद है, एक एग्जांपल पता था कि ला पाल्मा वोल्केनिक एपिसोड हुआ था 2021 में। सो आई गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट। और मैंने रीजनल डायग्राम्स बनाए थे। इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, so I made a separate diagram of Asia and showed what are the major mountain ranges. I drew a separate diagram of Europe and show these are the Alps, these are Jura mountains and these are all these different mountains. फिर मैंने अफ्रीका का मैप बना के बताया ये एटलस माउंटेन्स हैं and these are Drakensberg, यहाँ हग्गर माउंटेन है, ये वो है। और मैंने फिर विद रिस्पेक्ट टू साउथ अमेरिका मैंने अलग से इंडीज का डायग्राम बना दिया था। So this is how, and with respect to how did the wind system वाले क्वेश्चन में मैंने रीजनल डायग्राम बनाए थे। So possibly these might have worked in my favor, but again I attempted all the questions। और वही मैं हर किसी को कहते जा रहा हूँ कि attempting all the questions is very important when you are going for your paper 1। कॉन्सेप्ट वही रिवीजन करो नॉर्मल। सर जब आपके पास पेपर आया था GS1 का, देन आप कितने क्वेश्चंस ऐसे श्योर थे कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? 1 और 2 क्वेश्चन? मुझे पेपर देखना पड़ेगा। लेट मी सर्च अ पेपर दिस ईयर। एक सेकंड। यार अब देखो ऐसा है कि जनरल स्टडीज पेपर में अब देखो जो भक्ति नेचर वाला क्वेश्चन था वो भी आसान था, सोशो रिफॉर्म ये वाला भी आसान था, एसएसडी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ये वहीं पे सोचना पड़ा, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं था व्हिच यू कुड हैव डन। लैंडस्लाइड वाला क्वेश्चन आसान था, गोंडवाना लैंड वाला क्वेश्चन आसान था, एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन वाला थोड़ा सा मतलब ऑल ऑफ अ सडन था, बट यू कुड हैव रिटन दिस आंसर वेल इफ यू वर फॉलोइंग द डिबेट दैट वाज हैपनिंग ऑन श्रिंकिंग अर्बन वाटर बॉडीज इन इंडिया, यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। मुझे लगता है मोर और लेस सारे क्वेश्चन ऐसे थे व्हिच यू कुड हैव डन। आई थिंक इसमें ऐसा क्वेश्चन था नहीं कोई। देखो पेपर 1 में ऐसा क्वेश्चन था नहीं। देख पेपर 2 में एक क्वेश्चन था कि मतलब 14th फाइनेंस कमीशन का 15th फाइनेंस कमीशन में क्या इंप्लीकेशन हुआ, या पेपर 3 में क्वेश्चन था जो साइंस एंड टेक वाला था, ब्लू एलईडी वाला, या कि जो नए हेल्थ इंडिकेटर लाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या चेंज आया है। आई थिंक ये क्वेश्चन होते हैं व्हिच नोबडी नोस, व्हिच इज अ बाउंसर फॉर एवरीवन, बीमर फॉर एवरीवन, बट these questions, some questions look very vague but they are doable, and you have to be in a situation that at least you are able to write a decent enough answer, or that decent enough answer will come only once you have done once you have written enough test. Sir, what helped you in your essay, sir, and what was your mindset while giving the paper? Essay में मेरे बहुत अच्छे नहीं है, 128 is a decent enough score this year, पर essay का वही है कि attempt depending on the situation. Don't go prepared with a preconceived notion कि इस साल के essays will be factual or philosophical. You have to be prepared for essays no matter what kind of essays come. Should we continue the session? आपने कोचिंग और क्लासेस आपने सेल्फ स्टडी को सर मैनेज कैसे किया? क्या सर आपने कोचिंग और सेल्फ स्टडी को सर मैनेज कैसे किया था कि मतलब पहले 2-3 घंटे खुद पढ़ते थे या फिर कोचिंग पे जाते थे या कैसे सर आप? समझ में नहीं आया आपको क्वेश्चन। आपकी कोचिंग और सेल्फ स्टडी को कैसे किया? देखो कोचिंग का जो पढ़ाई हो रही है उसको you'll have to do it. There's no alternative to not studying for coaching, not studying the notes for the coaching, but you'll have to find out some time for your coaching, and without self study UPSC नहीं क्लियर होगा। अगर कोई किसी को लगता है कि ये ORN में कोई ऐसा प्रोफेसर या कोई टीचर है जो आपको हाथ से नोट्स दे देगा, ये लो यही पढ़ लो और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और तुम्हारी रैंक आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। Whatever, even maybe the best teacher in the market will not be able to help you clear UPSC if you're not going for self study. सर एक और क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर ये तो सब ऐसे जिस मतलब कोई भी मतलब
जिसने यूपीएससी क्लियर किया सर, उनके अगर लेक्चर वगैरह सुनते हैं तो वो सब कहते हैं कि ये पढ़ लो, ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर जो ऐसे ही तैयारी करते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं होता। तो उनमें और उनमें जो क्लियर हुआ है और जिसका नहीं हुआ है, उनमें सर क्या डिफरेंस होता है कि मतलब वो इतनी स्टडी करने के बाद भी रह जाते हैं? और वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। अगर अगर आप कोई कह रहे हो कि उसका इतने साल पढ़ाई करके भी नहीं हो रहा, तो इधर दे आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन और दे आर नॉट स्टडी। अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो तो यू विल क्लियर इट। बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, उनको लगता है दे आर इन द राइट ट्रैक बट पॉसिबली दे आर नॉट। तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड पॉसिबली आई थिंक वन थिंग आई कैन से कि मैंने रियलाइज किया देयर इज ऑलवेज सम मिस्टेक। आई थॉट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज स्टडीइंग वेल, आई वाज पुटिंग इन 8-10 आवर्स एवरी डे, पर तब भी मेरा नहीं हुआ। अब मैं कहूं कि आई वाज ऑन द राइट ट्रैक, नो आई वाज नॉट ऑन द राइट ट्रैक। I was not doing test series for prelims. So even though I was studying, I've always been a laborious student. I was पता नहीं मतलब मैं सही कर रहा था, मुझे लगता है मैं सही कर रहा था तो मेरा होना चाहिए। In the second attempt when I had written my mains paper, I thought I was doing well, I was on the right track, but again मेरा नहीं हुआ। Then I realized कि मैं भी गलती कर रहा था by not writing test. So इस there are always some mistakes which we can improve और वो हमारा selection कराती हैं। अगर if you've been able to catch those mistakes and you have been able to amend those mistakes. Yes, sir. Sir, after attending this meeting, should be concluded. I mean, after attending this meeting, it should be need to attend the 5 p.m. meeting. हाँ, conclude करते हैं। बस 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं और ठीक है। Okay. 4-5 क्वेश्चन लेने के बाद I will conclude the last. Sir, can I ask? Sir, can I ask, sir? Yes, sir. After attending this meeting, can we attend the 5 p.m. meeting of yours, sir? 5 p.m. meeting? अच्छा, yes, web, हाँ, yes. उसके बारे में हम वहीं बात करेंगे। anyone is welcome। यहाँ पे क्या बात करनी है उसके बारे में? अच्छा भाई, sorry sir, I don't know Hindi. You know everything. 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचे हैं। अनमोल को भी जाना होगा, मुझे भी जाना है। अच्छे क्वेश्चन पूछ लो 5। Sir, kindly share your notes, sir, at least the initial expert. Sir, can I ask the question? If this can reach to everyone who's listening to me, मैं अपने I need some time. क्या भाई अनमोल? I'm speaking to Forama's owner, so I want to mention one thing. Like everyone is saying, we are doing hard work. So he suggested me like real hard work. Real hard work is the revision and doing repetitive things consistently. It's not like sitting on the table for 12 to 14 hours reading new things. I think revision is the hard work, and this is where things become. Reading everything first time is easy, but to revise it again and again, this is a very boring task, and this is something that you'll have to take head on. Without revising it enough times, it is very difficult. But let me about sharing geography notes. Everyone asks me every day, sends me a message on Instagram. Sir, apne notes share kar do. Yes, I will share every last bit of my notes, but I need some time. I have not been able to find time after the results. And these people charge very high rates for scanning also. Somebody told me 5 pages for scanning, and imagine that dent that I'm going to face if I were to scan this. So you see, I have my own issue. So also there's an issue of ownership. If I were to ask anyone else to give all of my notes, and he will say that we'll publish it in our name, then it becomes an issue. I don't want to do that. I don't want to conscript it. I don't want to give it to anyone else, but I will upload it. I will scan it and upload every last piece of my note. Don't worry about that. So if this could read to every geography person out there, okay. Now 4 questions. Thank you. Last 4 questions. Okay. सर मैं पूछूं सर? The last question. Sir, can I ask? Hello, sir. पूछो। भावना पूछ रही थी। Hello, Sir, hello, sir. as Let her ask her. Bhavna, okay. पूछो Bhavna. Yes, sir. Sir, as you told that you have used so many example and case study in your answer, and the main source was newspaper and the mains 365. So I was asking, sir, how recent example you have used? Like UPSC requires how recent example? Can I use 1 and 2 year old example? As recent examples. You can use as recent examples as possible, and possibly don't go for very old examples, because they might, even the people who are not checking it might not remember it. If I can give an example, in my essay I had given examples of the Kazakhstan protest
I was writing my essay paper on 7th of January and the Kazakhstan protests were happening on 6th of January. So as recent example, as you can, that can you give? But I think don't go for super old examples, because in super old examples, they might not even remember it. But Kazakhstan protests, since they were happening then and there itself, so everyone possibly remember it for the next 2-3 months. So that's how I do it. Now last three. And sir, one more question. Sir, one more Yes. question. As you told that our study should be integrated, so what is the right way to practice the answer writing? Like whether we should join the test series or we can do by the PYQ? I think best thing is to write those 3-hour tests. And writing in a simulated manner it's a better thing. And this is one thing that I would like to bring to everyone's attention. Writing test within 3 hours is a better thing. Close your room. Nobody is allowed to come in. You are not allowed to go out. Write for 3 hours. You're not allowed any washroom breaks, nothing whatsoever. Because even in the examination, you should not waste even 2 minutes or 5 minutes of your time. Because when you're giving 7 minutes for your answer, imagine you're going out for 5 minutes, you're losing out on at least 4 or 5 marks. Okay, so that might decide your service. You don't have to go to. So prepare yourself for those kinds of exam. And the more, I think there's a very famous proverb, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. Yes. That is you have to. After that, अगर आपको समझ में आ रहा है कि कुछ और जरूरत है तो आप उसको ऐड कर दो. तो 3 स्लॉट होंगे. Once is your core studying, whether from notes or from books. The second will be your test series का एक slot होगा. 4-5 घंटे का अच्छे से देना है, उसको मिस नहीं करना. This is the most important slot. And the next slot would be current affairs, जहाँ पे आप PT65 पढ़ रहे हो या कोई भी current affairs की manual पढ़ रहे हो या newspaper भी पढ़ रहे हो. Okay, thank you, sir. No, last question. I'll take just last question. Hello. हाँ बताइए मोहम्मद सैफ. Yes, sir. So just to conclude, like as you are already selected now, what was the most important tips or keys basically which you suggest to clear the exam in the initial? सबसे बड़ी चीज तो मैं ये बोलूंगा कि for prelims practice as many tests. Without tests prelims नहीं clear होगा, given the unpredictable nature, especially क्योंकि इतना इसी साल 1 pair 2 pair 3 pair हो गया. But somebody who is writing test, he would have understood देखो जो टेस्ट लिखता है, he would have understood कि these are the nerves that he will have to calm during exam, and he would have calmed them. And the moment he calmed those nerves, he would have वो गुगली जो आई थी ना इस बार 1 pair 2 pair 3 pair वाली, he would have handled it very well. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. I have met people who have done, I think 8 क्वेश्चन आए थे 1 pair 2 pair वाले, उसने 6 या 5 से करेक्ट कर दिए हैं. So it is और how will you handle your nerves depends upon how well you have sweat in peace, how many questions, how many tests you have done. तो वो करना है prelims के लिए. और दूसरा वही रिविजन करो. और मैं तो और अपने जो PT65 है या कोई भी करंट अफेयर्स की मैनुअल है, you have to read it very well. For mains again, keep your sources restricted. Master your optional. Again, master your optional. I am to the power 1000 times. Without mastering your optional, it is very difficult to get a good rank in UPSC. And practice answer writing for your mains. उसके बाद जब इंटरव्यू आ जाएगा तो आई थिंक nobody should worry about interview now, because interview is more or less a very ad hoc thing. मतलब अगर आप if you have a good personality, you might end up scoring very good marks. बहुत लोग तो गाँव आके भी आ जाते हैं इंटरव्यू में, शायरी सुना करके आ जाते हैं. So it's a very 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 good interaction that you have. एंड उसके लिए पढ़ाई भी इतनी नहीं होती. आपको केवल करंट अफेयर्स अपना जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको पढ़ना पड़ता है. बट फॉर द इनिशियल फेजेस, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, आई कैन टेल यू फॉर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर मेंस, newspaper reading, writing answers regularly, practicing answer writing is very important, and mastering your optionals and being consistent. Again, I've rated consistency as a virtue which is higher than hard work, because हम UPSC में आ रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस है कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बट हम कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे कि 10 दिन की मतलब 8 अच्छे से 8 घंटे पढ़ाई करी, कल परसों हम चले गए माई बार में. ठीक है, तो वो सब नहीं करना है. एंजॉय, थोड़ा सा गिव अप. Share your schedule on your Telegram channel. This is the last question that I'm taking up about the schedule. After that I won't take up. मेरा शेड्यूल बहुत सिंपल था. मेरा वो वाला शेड्यूल नहीं था कि 2 घंटे से 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लिया, फिर आधे घंटे का रेस्ट, 3 घंटे पढ़ लिया, फिर आधे घंटे का रेस्ट. मेरा शेड्यूल वाज वेरी सिंपल कि 3 slots में मेरा दिन डिवाइडेड था. The first slot was for optional, the second slot was for general studies, and the third slot was for
करंट अफेयर्स वाला स्लॉट 3 घंटे का था, और जब मेंस 365 आ गई थी, सो आई हैड रिड्यूस्ड 1 आवर फ्रॉम माय ऑप्शनल स्लॉट, 1 आवर फ्रॉम माय जनरल स्टडीज स्लॉट, तो 3 घंटे तो न्यूज़पेपर में तब भी पढ़ा था, प्लस 2 आवर्स आई वाज रीडिंग दिस करंट अफेयर्स मैनुअल, और मॉर्निंग वाला स्लॉट वाज द लॉन्गेस्ट, और मॉर्निंग में मैं ज्योग्राफी पढ़ता था, तो वो कभी कभार 4 घंटे भी लगातार पढ़ रहा हूँ मैं, कभी 2 घंटे पढ़ने के बाद ब्रेक नहीं लेता था, मैं 6 घंटे लगातार जब पढ़ लेता था, जब मैं थक जाता था, so I used to take a break of one and a half hour, उसमें बिल्कुल आधे घंटे का ब्रेक पता नहीं चलता, देखो हवा में ऐसे निकल जाता है तो पता भी नहीं चलता है, जब तक 1.5 घंटे का ब्रेक नहीं आ रहा है तो मजा नहीं आता है, तो 1.5 घंटे के ब्रेक में मैं खाना भी खा लेता था, इफ आई हैड टू टेक अ बाथ आई टेक अ बाथ, और उस टाइम पे मैं कोई खाना खाते समय कोई वीडियो देख रहा था, कंटेंट देखना था, देख लेता था, तो इस तरीके से मैं उसको फॉलो करता था। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जब 1.5 घंटे का सेशन होता था तो मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देता था, जनरल स्टडीज में करता था 2-3 घंटे जाता था, और उसके बाद 3 घंटे मेरा फिक्स था, तो फिक्स केवल एक चीज थी, 3 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग वाज फिक्स, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 4 घंटे भी अगर ऑप्शनल पढ़ना होता तो पढ़ लेता था, मैं 6 घंटे भी पढ़ लेता था, द लॉन्गेस्ट दैट आई हैव read optional was I started 8:30 in the morning and I would have read it at least 5:30 without getting up मतलब ये नहीं है कि बाथरूम ब्रेक्स नहीं लिए, मेरे पास खाना आता था, I had a tea somewhere between, but कंटिन्यूअसली पढ़ाई चलती रहती थी, 5 मिनट का ब्रेक एट मैक्स, पर वो किसी से रेयरली होता था, बट यूजुअली 8:30 इफ आई कैन गिव यू अ वेरी जनरलाइज्ड सेटअप, अगर एवरेज निकाल के तो 8:30 आई वुड सिट एंड आई वुड गेट अप एट अराउंड 1:32 एंड देन आई विल सिट अगेन एट 3, आई विल गेट अप एट अराउंड 6 पे या 5, 6, 7:30, then I'll take a break of 1.5 hour, I'll go to study at 8, get up at 11, and after that जो 2 घंटे होते थे वो एड ऑफ होते थे, या तो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर ली, तो उस दिन एवरेज पढ़ाई का 12 घंटे से 14 घंटे पहुंच जाता था, 13 घंटे पहुंच जाता था, और नहीं करनी तो जो वेब सीरीज देखनी है देख लो, जो मस्ती करनी है कर लो, दैट वाज, और या कोई भी ऑनलाइन सोर्स में बताया ना, रैंडमली आई यूज्ड टू फॉलो सनसेट टीवी का पर्सपेक्टिव देख लिया, या इसका वो देख लिया, इसका वो देख लिया, तो ये था, मैं वो नहीं स्लॉट फॉलो करता था कि 2 घंटे से 2 से 3 ये पढ़ लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट जैकेटिंग लीड्स टू अ सिनेरियो वेयर यू आर नॉट एबल टू, इसमें इतना फोकस हो जाते हैं कि हो नहीं पाता है, देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस, सो ऑलवेज कीप इनफ ब्रीदिंग स्पेस अवेलेबल इन योर शेड्यूल सो दैट यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर सम टाइम, और ऐसा भी होगा कि पहले दिन से फॉलो करना आसान नहीं होगा, सो यू विल गेट यूज्ड टू इट स्लोली एंड फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे, देन यू कैन अकॉर्डिंगली चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स। अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक टेस्ट आ रहा है जिसमें मुझे जनरल स्टडीज का पढ़ना है, तो यू विल स्टडी जनरल स्टडी, आप ऑप्शनल केवल 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ सकते हो, मैं ऐसा नहीं करता था पर आप कर सकते हो, और जनरल स्टडीज को आप 6 घंटे पढ़ लो, इस तरीके से अपने हिसाब से यू हैव टू मॉड्यूलेट इट, and that's how I did it. I think we are done with the questions. Thank you everyone for coming. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. You comprehensively took all the questions from us. Thank you. Really, thank you. Thank you so much, sir. Thanks to all for your patience and presence, and thanks to Yasharth for giving your valuable time. Also, I want to know one thing. Like on 24th, we are session with the Sharia Shri on Engineering 71. तो आपके पास 10 दिन है, तो कुछ जो भी आपका इशू आ रहा है तो लिख सकते हैं। तो on 24th we are session with Sharia Shri on Engineering 71. तो आप पूछ लेना। I think Anmol bhai is doing service to almost all the aspirants. चलो हमने जो सफर किया, we would expect not everyone else, you know, who is going to give exam suffer through that, because you know बहुत struggle और लंबा फेस होता है, so even एक छोटी सी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या छोटी सी बात भी, मतलब इवन इफ कैन बटरफ्लाई इफेक्ट नहीं होता है, एक छोटी चीज इतना बड़ा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। होपफुली एवरीवन, इट हैपेंस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन एंड्स अप क्लियरिंग यूपीएससी एंड गेट ऑन द अदर साइड and you know enjoy, but put in your hard hours today, you'll realize that every ounce of sweat that you have put in today, you will find that it is worth every tear you have shed, every phase, every bout of depression that you've had gone through. You will realize everything is worthwhile. So thank you everyone for coming. I'll take everyone's leave. Bye. Thank you, sir. Thank you. भाई जब भागोगे ना ऐसे दबा के और ऐसी डायरेक्शन में भागोगे जहां कोई नहीं भाग रहा और तुम जैसा भाग नहीं पा रहा क्योंकि देख के डर रहे हैं कि यार ऐसा भागूंगा तो गिर जाऊंगा, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तब ऐसी सक्सेस मिलेगी जितना वो लोग पूरे लाइफ में नहीं, आपको पता चलेगा आप 3 साल में